from the west, making days quite cold. On the back foot, beautifully driven, absolutely fantastic timing that was. No need for Geetsel to run as the ball will do the running. What a cracking beauty that was on this second delivery. He has timed it and timed it to perfection. Beautiful execution. Time boundary, and that will definitely boost the confidence of Geetsel, and he will be looking to a few of those at least in the 6 overs of the power play. Nicely done, sensible. And this is the beauty of Geetsel. He's not going every ball bang to the fence, but very calculative, very natural batter. Reads the line, reads the length so early on and gets in a position. Technically so good, Geetsel. On the back foot. This time once again timed, but missed on the timing. This is a good comeback from Anish Kakode. After that, half volley and slightly outside the off stump, prompting the batter Geetsel to just come with the drive. And what a perfect driver that was. Glorious cover drive to the fence. On the back foot, a slightly bit of a rising delivery there, but good line from Anish Kakode, bringing the much needed control after that. Brilliant shot, brilliant boundary from Geetsel. This is going to be a good contest for sure. The fight for the semi-finals, the fight for the position in the final. A full toss this time. Once again, the ball finds the gap and will race it to the boundary. And yes, it is. Absolutely not a good delivery from Anish Kakode, and made the most with that full toss lower. And once again, put the ball to the fence. Geetsel, once again, the timing perfect. To bowl to. On strike is Naishat Kamath. 2 overs completed, and still not a single delivery has been faced by Geetsel of the bowling of Marvin Carvalho. Oh, once again, slightly wanted to play on the longer region this time, Naishat Kamath. And Marvin has been known to maintain that perfect line, good areas, consistently, not allowing enough room to the batter. Nicely done, but straight played back to the bowler. Marvin Carvalho, back-to-back 3 dot balls in a row. Once again trying to make the over tight and perfect, giving a good shine to the bowler. It's very early on in the morning. It is definitely an advantage for the bowler. But after winning the toss, Mukhtar Qadri opted to bat first, put up a good total and then defend. Nicely done, but this time it should be just one. Yes, it is. Good backup there.
A slight fumble will not allow the batter to convert that single into two. And this time now, Gate Sale will be facing Marvin Carvalho. Very good morning to everyone who is just joining us live through YouTube Photosonic. I would like to just inform the viewers who have just joined us. Toss won by Dempo Challengers and the captain Mukhtar Qadri opted to bat first. This is the second semi-final. One team has already made its place in the finals is Prescon Panthers. And then now the match is between Dempo Challengers versus LPK 11 in the second semi-final. Team winning this match will go in the final zone to play tomorrow morning against Prescon Panthers. So all the best for both the teams once again. All the players will have to put in their best of efforts and ability on the ground to make their team reach in the finals and win. Full toss, slightly fuller on this time, but maybe slightly outside the off stump. Though there was a swing of the bat, but missed it completely. Geet Sale, when he times it so perfectly in the last over that he was batting. Two boundaries which came up from his bat in the second over, took the team's total to 9. On the back foot, unable to decide whether on the front or on the back foot. That was the length been maintained by Marvin Carvalho. Absolutely, once again, a fantastic over from him. Just considered 1 run after the completion of 3 overs. It's 10 without a loss. Dempo Challengers batting first. What a way to bowl to his team in the semi-finals. Marvin Carvalho is just the bowler with a golden arm for sure. 12 deliveries that he bowled, just gave 2 runs. Not allowing the batters to score more than 1 every single over. Marvin Carvalho bowls. Anish Kakode once again on the bowling mark from the far end. Oh, straight to the field. They missed it. Absolutely, that was an opportunity for Marvin Carvalho. That would have been a catch for sure. It wasn't difficult at all. Maybe some sort of shining in the eyes has taken his eyes off from the ball. Look at that. Still he's complaining about that. Maybe the sun was just shining right in his eyes. He was completely blackout to judge the ball. The ball just brushed with the fingertips and just went down. That would have been a first breakthrough, the very first delivery of the 4th over. And Anish Kakode would have struck early on in the very second over and the very first delivery that too. It was a lucky survival here for Naishad Kamath. What a whisker that was. Absolutely, it looked like an easy catch that was, but very difficult to judge against the shining sun. Shot of length way outside the leg stump. Wide signaled to official umpires for this match. Most disciplined and one of the high-rated official umpire who did a fantastic job at double in Premier League as well on 25th, 26th. That is the Republic Day. Is Vaman Mahekar. Joining him is Atmaram Arulkar. On the back foot, beautifully played and puts it in the gap, but there is a backup fielder there. The batters will settle down for just a single with that. Once again, beautifully carved and
He knows to play in the gap. Gate Sale has been getting some runs for the team initially. Lot of runs as compared to Naishat Kamath. But this is a good combination right from the beginning, sent by Mukhtar Qadri, right hand, left hand combination. It's a good thinking captain. Was a very smart, intelligent, shrewd captain. Mukhtar Qadri has been known as one-man army. All after shot, beautifully put it, but finds the field in the deep gully region. He cut it off, he does well. Yes and no in between, in the meantime by the batters, but just one run conceded with that good looking shot from Naishat Kamath. This is exactly what happens when the batters spend some time on the crease. They get adjusted, adapted to the situation of the crease, and then after spending some time, they like to play their natural. But the batsmen have spent at least 3 overs, almost 20 deliveries, and now they're timing it quite beautifully and perfectly. Anishka Kode. Watchfully played, a good line, that was good line. The best thing about both this bowler, Marvin Carvalho and Anish Kakode, is they are not getting difficulty in bowling the good perfect line for the right hander and then to the left hander. Normally it's very difficult for the bowler to maintain that perfect line for both the handed batsmen. Oh, slightly in the leg side in the ball. Slightly way outside the leg stem, a signal of wide from Atmaram Arolkar. Maybe Anishka Kakode on this occasion tried to just bowl a bit of an extra pace there. And that is how, where he just missed the line completely. Panjim Gymkhana Members League are coming to an end tomorrow. Will be the concluding match. What a fantastic tournament this was. Weekends. On the back foot. Wanted to drive but didn't quite time the ball, but still will get a single here and played in this square leg region. The short square leg to be precise. Where Devidas Kholkar has been deployed. Vinay Palekar, Devidas Kholkar got a big role to play in the match for LPK 11. Vinay Palekar looking quite good today. In spite of a little bit of injury in the leg. He's a fighter, Vinay Palekar. Ex-Ranji, very talented bowler. The ball is up and the fielder beneath. Oh, we will not get to it. It wasn't a good judgment at all. Exactly somewhat like Washington Sundar. Misjudged the catch. As they were playing against the West Indians. To the stroke play of Hitmaier. The judgment is very important. However, with a single, once again a catch going down. It is the end of 4 overs. 18 runs for the loss of no wickets. Batting. Start for a team. Tempo challenges Naishat Kamath and Geet Sale. Once again a fantastic start. However, after the completion of 4 overs, it's 18. Oh, this time we'll have to wait for the signaling. It looked like from the pad and leg by signal. It doesn't matter where the ball comes from, your helmet, your nose, breaking your eye, your chin. The ball is coming from the chest, shoulder, six-pack, ab. There is a run. Still, official umpire will signal it a leg by, and not a head by, not a nose by, not a chin by, not an eye by, not a shoulder by, chest by, or a six-pack, ab by. It will still be signaled as a leg by. However, with the help of this leg by single, score moves up to 19 runs. Half volley.
Oh, outer edge of the bat takes the ball straight. Deep third man region finds a fielder. Once again, perfect fielding there. Restricted the batters to just one. With the help of the singles, now the score moves up to 20 runs. Once again trying to just keep it straighter and giving no room. Marvin Carvalho is bowling a fantastic line. Score is 20. First over he just conceded one. Second over he just conceded one. This is the third over of his and the fifth over of the team. Oh, full toss, maybe trying to just bowl right in the block hole. Geet Sale is also struggling to just time the ball to Marvin Carvalho. This is the fifth over, and after which the last over will be bowled of the power play overs, wherein just two fielders are outside 30-yard circle. With the batters has an advantage to make the most out of those deliveries in the 6 overs. Oh, way outside the off stump, but within the parameters, well bowled. Missed it completely. If slightly Marvin Carvalho can focus on his fitness, he will be a devastating bowler for sure. You never know, even he might just get a call from the Indian national team. Look at that beauty, absolutely. Oh, fumble there from the wicket keeper. Will allow at least a couple of runs here. Geet Sale, oh, the ball might just race away. And yes, it does by and a boundary signaled. Oh, this is just some extra runs. Very unhappy. When he was so economically good, Marvin Carvalho just considered one runs every over, and now a slight fumble and the ball raced away with the pace of Marvin Carvalho to backward of the wicket keeper. By and boundary signaled by Vaman Mahekar. This 4 runs takes the score up to 24 runs. On the back foot, just wanted to play over left it beautifully. The ball swung quite a bit, drifted down to the leg side of the left hander. He's utilizing that seam so nicely, Marvin Carvalho, and he's getting a good swing, the help of the swing early on, and giving a good shine to the ball one side. He's a fantastic bowler of LPK 11, and he's got the jersey name number 11. That ball sums up the over number 5. It's 25 without a loss after 5 overs. Well, changing the bowling from the far end. A loud, short, confident appeal. It looks like Sachin Sardesa has been brought into the bowling proceedings. In the 6th over, the last over of the power play leg by signaled.
Sachin Sardesai from the far end. The very first delivery is a leg by single. Will take the score to 26 runs. Dew is going to be a big factor. We saw that in the previous game as well. That had probably allowed the batters to get into the game and trying to get some break pretty early on and put up a good total convincingly. And that is exactly what we see from these batters. A shot of length. The bottom edge of the bat takes the ball straight once again in the deep third man region. Finds the fielder. Excellent piece of work there and restricted the batters to just one. The fielding has been quite good right from the beginning of LPK 11. All the field has been fantastic. Of course, a few catches gone down, but the fielding is up to the mark of LPK 11. Well, it is one. The fielders are just giving one, not more than that. We haven't seen any fumble and the ball has gone for the boundary except that from the wicket keeper. In the last over of Marvin Carvalho. That was slight fumble there from the wicket keeper and the ball raced away in the form of by boundary. Just away, literally leaning and was quickly seeing towards the official umpire Atmaram Arulkar, expecting a wide Naishat Kamath. But it wasn't. It was a perfect line, playable delivery, as it was being cited by Atmaram Arulkar. Sixth over in progress, the last over of the power play. Floron on the half volley. Excellent, good fielding on his own ball and good follow through from Sachin Sardesai. He is a good complete all-rounder performer. Good package for the T20 format of the game. Very good batter, specialized batter. And we are expecting a lot of runs from his bat today. Oh, this time wanted to play. Naishat Kamath missed the line completely from the pad and still will not get a single even. The batters need to convert every ball at least minimum to a single, if not to a boundary. They should keep rotating. The strike is very important early on. Doesn't matter if you don't make the full use of the power play overs, but still that continuity, that momentum is very important for the batters. Just keep. Nicely done. One run comfortable. Straight to Vinay Palekar in short third man region. The single takes the score up to 28, and that marks the end of 6 overs of the power play. It's 28 without a loss. Over. Almost 5 runs. But slowly now they need to just build up the speed. At least try to convert every single ball into a run and a lot of runs. What they're scoring now is 4.6 every over. They should just try to score 7 to 8 runs. As now both the batters are nicely settled down and they're seeing the ball like a football.
On the bowling mark, Manish has been brought to begin the 7th over. After that, field has been spread. Now you can see 5 fielders outside 30-yard circle. A flighted delivery on the half volley, beautifully put it away, and the ball is racing away. Excellent piece of work. The slide fumble. Oh, that would be a mix-up. Oh, just got lucky. Nice shot, but no need to run for that when Giselle was saying waiting. And quickly getting back on time. Otherwise, that would have been the first breakthrough for LPK 11, as they were looking for one wicket to break this partnership, which is going so well. Completely mixed up, stranded right in the middle of the crease, which way to run. Naishat Kamath quickly making his way back to his crease. Just a lucky survival. Everyone thought that he'll be out. And the Geet Sale said waiting, and he was just not running. He was clear in his mind that it's just one run after a slight fumble. But he didn't want to take that chance to go for that 2, as that was his danger end. If he had to run, Geet Sale would have been in trouble for sure. However, Manish Kakode slightly once again, but adjusting a bit of a fielding arrangements. He'll be ready to bowl, and this is the 7th over, which is in progress. Once again, flighted delivery, beautifully worked and played on the front in the covers. They should push, they should pressurize the fielders. And that is exactly what is been expected there from the dugout of Dempo Challengers. All are screaming, yelling to make every single into 2. The batsman has to be more ambitious. Every ball is bringing those adjustments, Manish Kakode. The reason, left hand, right hand combination. Oh, lovely shot. Is going to go all the way. It's gone. Yes, slightly up. It is up and over. That's a 6 runs. Beautifully timed and well executed. The ball coming right out from the middle of the bat. Maximum. Ball for 6 runs. The score with the help of this sixer has gone up to 36 runs. On the back with beautifully played in the covers, there is a fielder. Won't be any runner, just a dot ball with that. It's good comeback from Manish Kakode. 7th over, which is in progress. The score with the help of that sixer goes up to 36 runs. Oh, lovely shot once again. The ball is up and there is a fielder. Oh, he has put it down and the ball has gone. Rolled over to the fence. Devidas Kholkar there. And there wasn't the sun shining in his eyes, for sure. Oh, half volley once again, hit it straight down the ground. No footwork will go do. And the ball has raced away once again. Beautiful back-to-back boundaries from Naishat Kamath. He's on fire.
Absolutely, what a great striking from Naishad Kamath. He was just unleashing a flurry of strikes. 6-7 boundaries followed. Back to back. What a way to bring an end to the 7th over. Score is 44 runs without a loss. All the wickets are in hand. 23 runs is an individual score of Naishad Kamath. 35, what a maximum the batter can score. Sachin Sardesai once again on the bowling mark from the far end to begin the 8th over. Score is 44 without a loss. Batting first after winning the toss. Dempo challenges. Oh, beautiful delivery to start with the 8th over. Doesn't matter how good the bowlers will try to bowl the deliveries, maintaining good areas, good line and length. But once they get going, the batters are getting just unstoppable. Naishad Kamath and Gitsel. A shot of length slightly, but the line is so very perfect. Good variation in the length from Sachin Sardesai, but he's keeping the line very, very perfect. His long upper arm and a fluid rotation in upper body, which enables him to bowl that perfect line, is a good height as well. Sachin. Good combination of line and length and the pace. Optimized amount of pace as well. He's a great cricketer. I mean, knowing him since last almost a decade now, almost 10 years. As I still remember, he was playing for Politics 11, a team. During those time, I'm just talking about 2009, 10, 2011, 12. Was playing for Politics 11. In that time, it was a big clash between Goa Police and Politics 11, especially in the finals. These two meet, and what a fight, what a final that was fought between these two talented teams. Very quick delivery, and look at that perfect line for the right-handed batsman as well. Still asking a question with a big question mark from his right hand, Naishad Kamath. The score remains unshaken on 45 runs. This is turning out to be a very tight line over, and trying to just keep it all the bots dot. Sachin Sardesai, and slightly bit of an adjustment there in the covers. There is one fielder in the deep point region. There is a fielder long off, long on. Square leg. Oh, did they hit the ball hard? The ball is hardly going anywhere. Missed it completely. The timing plays a crucial role in the game of cricket. Whenever there is a good timing, the ball races away like a bullet coming right out from the gun. But the ball has been hit like with a sledgehammer. The timing what matters, and Naishad Kamath and Gitsel should rely upon the timing as much as their footwork. Good timing this time, but straight to the fielder. Another single, just 2 runs conceded, and what a fantastic over from Sachin Sardesai to take the score to 46 runs after the completion of 8 overs without a loss. Over! However, it's the beginning of the 9th over. Score is 46. So far, so good from them. But challenges, however, they are a bit slower though, but still good enough. That still keeps a smile going on the face of the captain, Mukhtiar Kadri. Manish Kakode once again on the bowling mark to begin the 9th over. On striking position is Naishad Kamath.
Oh, beautiful delivery. That was a quicker one. Right onto the off stump. And the first breakthrough here for the team LPK 11 as Manish Kakode strikes bold. Nice shot, Kamath on 46. What a breakthrough here, and the captain walks in at number 3. That is one down batsman Mukhtar Kadri on the striking position. And Manish Kakode is bubbling with confidence. What a delivery. That was a quicker one from once again a quicker one. I was a little bit surprised. The newcomer, the captain of the team, Mukhtar Kadri. It's every match he has gone out there, he has played his part. That has been the reputation of Mukhtar Kadri in this Panjim Gymkhana Premier League. Members League, I beg your pardon. Oh, slow one that was nicely worked and got off the mark with the single. Looking for 2 here, and they will get it easily. Oh, he's out! He's shot of the crease. Mukhtar Kadri is out in the form of run out, and what a good work from Manish Kakode and his own bowling. Good follow through, good running and throw right in the hands of the wicket keeper. It just fell short of maybe some inches, and Mukhtar Kadri is out. The wickets are falling now very quickly, one after another.
That was a slow. And Mehang Dharodkar got stumped out from the wicketkeeper. Aryan Mashelkar. Manish Kakod is absolutely a magical bowler. In what way to bowl absolutely wicket after wicket in this over. No one expected that he's going to take or pick up 3 wickets. Of course, one in the form of run out, and that too, he was so effective. Good follow 3, wanted to stop for 1. And when they forced for 2, it was a shot of the crease for Captain Mukhtiar Qadri, and that is how Captain departed. Now slightly on the back foot after giving a good start from Naishad Kamath and Geet Sale. Things are looking slightly dicey here for the team. Tempo challenges. The ball was up in the air and straight to the fielder. Slight fumble there has allowed the batters a comfortable single here. With the single, this moves up to 49 runs. So what a fantastic over. Marvelous over comes to an end. 9 was gone by. It's 49 for 3. What a match this is turning out to be. The fight of the Titans. On the back foot, wanted to play. Slide fumble. Taking their own time to run. Oh no, Gitsel and Aryan Mashelkar. In the end, they just decided to go for it. And what a confusion what is happening, and both the batsmen seems to be trusting each other now, as the fall of the wickets was very quick, and that in the form of run out stumping. Clean bowled has shaken the confidence of the batters.
Partnership will be very handy here for team Dempo challenges once again. Way outside the leg stump this time, so wide, definitely 50 up. Team Dempo challenges, which is coming after 9.1 over. Applauses and just trying to boost the morale. Now 51, big part. On the back foot driven, but straight to the field in the covers. Aryan Mashalka will take his time because he's a newcomer. New man, fresh leg. Geet Sale has been batting since quite some time at the beginning of the match. Once again a perfect line. Of course, Geet Sale has to take the charge. A shot of length. Oh, beautifully played, adjusting himself on the back foot. Just one, no fumble, no misfielding, no late Devidas Kolkar on the ball. That was a perfect clean pickup and throw right in the hands of the wicketkeeper. Restricted the batters to just one, and with this help of this single score has moved up to 52 runs. What a high performing match this is turning out to be, absolutely going down the wire. The tournament's two most high quality teams are battling against each other in the semi-finals. On the back foot, oh, loud shout, confident appeal. That was a good shot from Sachin Sardesai. Leg by signal denied, not outside. Maybe the ball would have missed the leg stump by big, not absolutely a big margin, maybe just would have missed the leg stump. And that benefit of doubt has prompted the official umpire to say not out. Missed it completely, and the ball wrapped on the pad. A leg by signal. Oh, full on. Good mixture of the deliveries here from Sachin Sardesai. Beautifully bowled that one, change of pace. Absolutely brilliant. The dead ball marks the end of 10 overs, going at the rate of 5.3. The score is 53-4-3. Dempo challenges.
ओवर की समाप्ति के बाद 53 रन 3 विकेट के नुकसान पर एक साझेदारी की यहां पर आवश्यकता दोनों ही बल्लेबाजों को। हालांकि अच्छी शुरुआत हुई थी दोनों ही टीम द्वारा, खास तौर पर जब टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय आया मुख्तार कादरी की ओर से, तो बिल्कुल एक शानदार शुरुआत नौशाद कामत और गीत सेल के बीच पनपी। उसके बाद 7वीं ओवर में लगातार विकेटें गिरती चली गई, यानी कि पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया नौशाद कामत। उसके बाद मुख्तार कादरी को रनआउट के रूप में वापस भेजा पवेलियन, फिर एक अच्छी स्टंपिंग के साथ आउट हुए मेहांक धारवाड़कर। तो इस प्रकार से 3 विकेटों की सफलता मिलते हुए मनीष काकोड़े को, तो फिलहाल विनय पालेकर को लगा है गेंदबाजी के क्रम में, जो कि शुरुआत करेंगे। 11वीं ओवर की स्कोर हुआ है 53 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यह दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला। फ्लैटर गेंद कदमों का इस्तेमाल किया, बिल्कुल आगे को आए और सुंदरता से गेंद को भेज दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में केवल 1 रन के लिए। तो फिर से एक बार धीरे धीरे शुरुआत होते हुए और एक साझेदारी बनाने की यहां पर प्रयास होता हुआ दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से। फ्लाइट गेंद संभल कर खेला आर्यन माशेलकर, जो कि एक बिल्कुल युवा बल्लेबाज और विनय पालेकर काफी तजुर्बेकार। यानी कि अगर क्रिकेट में कहा जाए तो विनय पालेकर हेडमास्टर और आर्यन माशेलकर पहली कक्षा के छात्र। बैकफुट पर 1 रन के साथ स्कोर को पहुंचाया 55 रनों पर। यह 11वीं ओवर जो कि प्रगति पर, तो बिल्कुल हल्के से एक दबाव बनाते हुए बल्लेबाजों पर, जिस प्रकार से मनीष काकोड़े ने एक ही ओवर में 3 विकेटों की सफलता दी अपनी टीम के लिए। एक मजबूत कमबैक करती हुई टीम एलपीके 11। ये इस टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल जो कि आप देख रहे हैं इस खूबसूरत मैदान यानी कि बांदुड़कर मैदान पर मुकाबला होता हुआ। गणतंत्र दिवस पर था पहला सेमीफाइनल और प्रेस्कॉन पैंथर्स ने वो सेमीफाइनल मुकाबला जीत अपने आप को फाइनल में प्रवेश करवाया। तो एकमात्र टीम जो कि फाइनल में प्रवेश कर चुकी है वो है प्रेस्कॉन पैंथर्स। अब इस मैच में जो टीम जीतेगी जाएगी फाइनल्स में। तो फिर से एक बार दोनों ही टीमों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आर्यन माशेलकर हालांकि यह काफी युवा खिलाड़ी मगर भारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर। स्ट्राइक पर आर्यन माशेलकर और विनय पालेकर गेंदबाजी कर्मी, जो कि ये 11वीं ओवर प्रगति पर। फ्लाइटर 1 बैकफुट पर खेलने का प्रयास पूरी तरह से चूके अच्छी विकेट कीपिंग के साथ फिर से एक बार डॉट गेंद कराए। हर एक डॉट गेंद निश्चित तौर पर एक दबाव रहेगा बल्लेबाजों पर। गीत सेल को बिल्कुल एक अच्छी समझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। इस बार बैकफुट पर खेलने का प्रयास, थोड़े से फुटवर्क पर रह गए आर्यन माशेलकर, हल्के से संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। तो डॉट गेंद के साथ एक खूबसूरत 11 ओवर की समाप्ति और 11 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 56 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
वल्लभ को लाया गया है गेंदबाजी करने, जो कि शुरुआत करेंगे। 12वीं ओवर की स्कोर हुआ है अब तक 56 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हल्की सी फील्डिंग में तब्दीली, फिर से एक बार वल्लभ गेंदबाजी करेंगे गीत सेल को, जो कि स्ट्राइक पर। फिर से एक बार वही कॉम्बिनेशन जो कि दिखाई देता हुआ क्रीज पर, लेफ्ट हैंड राइट हैंड का। वो फुलटॉस गेंद, कड़ा प्रहार, मगर वहां पर फील्डर की मौजूदगी, केवल 1 रन पर संतुष्टि प्राप्त करनी होगी। इस 1 रन के साथ स्कोर 57 रनों पर। अब इक्का दुक्का रन के साथ फिर से एक बार साझेदारी बनाने का प्रयास होता हुआ दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से, और निश्चित तौर पर रनों की यात्रा का दायित्व इन दोनों ही बल्लेबाजों पर रहेगा कि किस प्रकार से ये साझेदारी बनती है। हालांकि आर्यन माशेलकर हल्के से संघर्ष करते निश्चित तौर पर नजर आ रहे हैं, मगर साथ निभाना होगा गीत सेल का। फिर से एक बार आप देख सकते हैं तब्दीली, जो कि स्क्वायर की दिशा में फील्डर को हल्का सा हरकत देते हुए वल्लभ फिर से एक बार गेंदबाजी के क्रम में लोअर फुलटॉस पे ड्राइव कर दिया बिल्कुल गेंदबाज की ओर। डगआउट से भी एक मैसेज आता हुआ कि मार कर खेलो। ए लो, जोरदार शॉट लगाने का प्रयास। काफी निराशाजनक। निश्चित तौर पर मुख्तियार कादरी से उम्मीद थी कि लंबी पारी खेलेंगे, मगर एक खराब कॉल द्वारा अपना विकेट खोया। हालांकि उनके मन में था कि दूसरे रन के लिए नहीं जाऊंगा, मगर दबाव आया गीत सेल की ओर से। कदमों का इस्तेमाल इस बार हल्के हाथों से, हाँ ना होती हुई दोनों के बीच, दौड़े या ना फिर ना दौड़े, इस प्रकार के कश्मकश में दोनों ही बल्लेबाज फिलहाल काफी दबाव में बल्लेबाजी करते हुए आर्यन माशेलकर। वल्लभ की ये 12वीं ओवर, जो कि प्रगति पर अभी भी 2 गेंदें आनी शेष। कदम इस्तेमाल किया बिल्कुल इनसाइड आउट के साथ, गेंद हवा में, और एक आसान सा कैच के साथ गीत सेल के विकेट का पतन होता हुआ। यानी कि कुल मिलाकर अब 58 पर 4 विकेटें गिरती हुई ही इज आउट। बाएं हाथ के बल्लेबाज किरण शिरवाईकर, जो कि अब बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं। 4 विकेट खोने के बाद टीम डेम्पो चैलेंजर्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ये दूसरे सेमीफाइनल में पेंजिम जिमखाना मेंबर्स लीग का एक बेहतरीन मुकाबला होता हुआ। और बिल्कुल इस 1 रन के साथ स्कोर को पहुंचाया 59 रनों पर। 12 ओवरों की समाप्ति, 59 रन 4 विकेट के नुकसान पर।
किरण शिरवेकर को। तो मध्यवर्गीय पारी संभालनी होगी डेम्पो चैलेंजर्स की। तो फिलहाल विनय पालेकर फिर से एक बार गेंदबाजी के क्रम में गेंदबाजी करेंगे आर्यन माशेलकर जो कि स्ट्राइक पर। फ्लटर गेंद आगे आकर के लिए बल्ले का बाहरी किनारा लगा और पॉइंट की दिशा में सुंदर फील्डिंग के साथ केवल डॉट गेंद के साथ फिर से एक बार शुरुआत होती हुई। अब बिल्कुल जिस प्रकार से लगातार 3 विकेटों की सफलता मिली है मनीष काकोड़े को, तब से बिल्कुल एक दबाव बरकरार रखा है सभी गेंदबाजों ने। सुंदर लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए सभी गेंदबाज। इस बार हल्के से गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ और स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन के साथ स्कोर को पहुंचाया 60 रनों पर 60 आफ्टर 12.2, यानी कि ये 13वीं ओवर जो कि प्रगति पर। तो बिल्कुल अब एक सोची समझी रणनीति के तहत बल्लेबाजी करनी होगी किरण शिरवेकर को, अपना गार्ड लेते हुए अपनी मार्किंग करते हुए और एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ उतरे हैं मैदान पर। और मुख्तियार कादरी के काफी चहते किरण शिरवेकर और बिल्कुल काफी अनुभव उन्हें हर एक टूर्नामेंट में अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं किरण शिरवेकर। और खास तौर पर मैंने उन्हें देखा है टेनिस क्रिकेट में, बिल्कुल एक लाजवाब बल्लेबाज। यूनाइटेड पंजीकार में भी अच्छी बल्लेबाजी की थी, उसके अलावा तिसवाड़ी क्रिकेट लीग में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और कप्तान थे एक टीम के जो कि सेंट काइतान के, और अब डेम्पो चैलेंज के लिए खेलते हुए। जोरदार शॉट और इसी की मैं बात कर रहा था और गेंद बिल्कुल गोली की रफ्तार से जाते हुए मगर सुंदर फील्डिंग के साथ गेंद को वापस किया। सिद्धार्थ की खूबसूरत फील्डिंग, ऐसे लगा कि गेंद निकल जाएगी 4 रनों के लिए, मगर अपनी सूझबूझ के समझदारी के साथ सुंदर फील्डिंग होती हुई और उतना ही बढ़िया थ्रो। हालांकि बिल्कुल बल्ला घुमा कर खेला था और टाइमिंग बिल्कुल बढ़िया की थी किरण शिरवेकर ने, मगर फिलहाल केवल 1 रन के साथ संतुष्टि प्राप्त करनी पड़ी। तो फिलहाल फिर से एक बार विनय पालेकर आर्यन माशेलकर को गेंदबाजी करेंगे। जोरदार शॉट, गेंद हवा में 1 रन आसानी के साथ मिलेगा। बिल्कुल यही करना होगा आर्यन माशेलकर को कि हर एक रन के साथ ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक किरण शिरवेकर को देनी होगी, क्योंकि काफी अनुभवी बल्लेबाज और मुख्तियार कादरी भी काफी अनुभवी, काफी तजुर्बा, उन्हें काफी क्रिकेट खेला है गल्फ में और हिंदुस्तान की सरजमीन पर भी। जब कभी मुख्तियार कादरी को देखता हूं तो बिल्कुल एक शेर मेरे जहन में आता है कि अनुभव की भट्टी में तब कर जो निकलते हैं, दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। तो इस टूर्नामेंट में भी निश्चित तौर पर मुख्तियार कादरी का सिक्का जो कि चलता हुआ पंजिम पे जिमखाना मेंबर्स लीग। बैकफुट पर हल्के हाथों से कवर की दिशा में खेल दिया है 1 रन के लिए, इक्का दुक्का रन के साथ। अब फिर से एक बार पारी को संभालने का प्रयास होता हुआ दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से, हर एक गेंद पर 1-1 रन बटोर स्कोर को बढ़ाते हुए धीमी गति से। बिल्कुल काफी आदर्श माहौल और एक खूबसूरत मैदान, गोवा की सरजमी पर सबसे खूबसूरत मैदानों में से एक बांदुड़कर ग्राउंड जो कि पेंजिम जिमखाना का। आखिरी गेंद 13वीं ओवर की, विनय पालेकर फिर से एक बार आर्यन माशेलकर को गेंदबाजी करेंगे। फ्लैटर गेंद पूरी तरह से चुके डॉट गेंद के साथ होती हुई 13 ओवरों की समाप्ति 63 रन 4 विकेट के नुकसान पर।
तो जो दर्शक अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं यूट्यूब के माध्यम से, उन सभी को नदीम अहमद की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे पास समय है स्वागत करने का सीता भरद्वाज और उनके साथ प्रतीक नार्वेकर और मेरे बगल में डोमिनिक ब्रिगेंजा। मैं नदीम अहमद आपके सामने लेकर आया हूं ये मैच का विवरण। तो फिलहाल 14वीं ओवर की शुरुआत लेकर फिर से एक बार दूर वाली छोर से अब तेज गति के गेंदबाज सिद्धार्थ। चौदहवीं ओवर की शुरुआत 4 विकेट गिरे हैं और 63 रन जो कि स्कोर के खाते में। हल्के से मुस्कुराते हुए विनय पालेकर जब कभी मुझे देखते हैं तो बिल्कुल काफी प्रसन्न हो जाते हैं। जानते हैं कि मैं उनकी तारीफ के पुल बांध देता हूं। बिल्कुल एक होनहार खिलाड़ी और एक्स रणजी शानदार गेंदबाज। तो फिलहाल सिद्धार्थ दूर वाली छोर से गेंदबाजी के क्रम में सामना करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज किरण शिरवैकर। जिस प्रकार से यहां पर टेंट लगाए गए हैं बिल्कुल काबिले तारीफ करनी होगी उन सभी वॉलंटियर्स की। स्पेक्टेटर्स के टेंट के साथ साथ स्पॉन्सर्स टेंट, स्कोरर कमेंटेटर के टेंट और टेंटों से काफी खूबसूरत ये नजारा ये मैदान का दिखाई देता हुआ। काफी तेज गति से जोरदार अपील लेग बाय विकेट की, मगर नकार अंपायर देखना होगा इशारा लेग बाय का जो कि आता हुआ आत्माराम आरोल। काफी तेज गति से गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं गेंदबाज सिद्धार्थ। और लाइन और लेंथ बिल्कुल सटीक सुंदर लाइन के साथ शुरुआत होती हुई हल्की सी अपील लेग बाय विकेट के लिए, मगर नकारा अंपायर ने आत्माराम आरोलकर ने कहा नॉट आउट और लेग बाय के इशारे के साथ स्कोर धीमे से जा पहुंचा है 64 रनों पर। उनके साथ साथ हमारे YouTube लाइव पर निगम जो कि सोनू निगम के दूर के रिश्तेदार, पटकी हुई गेंद संभल कर खेला और सुंदरता से गेंद को भेज दिया डीप थर्ड मैन की दिशा में 1 रन के लिए। अब खुलकर बल्लेबाजी होती हुई आर्यन माशेलकर की ओर से। तो बिल्कुल जिस बात का मैंने जिक्र किया था पहले कि जब कभी बल्लेबाज कुछ समय क्रीज पर बिताता है तो निश्चित तौर पर आसानी से अपनी स्ट्रोक खेलता है। तो वही नजारा जो कि देखने को मिलता हुआ आर्यन माशेलकर की ओर से। पूरी कॉन्फिडेंस के साथ सुंदरता से बिल्कुल गेंद को दिशा दी डीप थर्ड मैन की ओर, 1 रन के लिए स्कोर को पहुंचाया 65 रनों पर। फिर से एक बार पारी को संभालने का प्रयास दोनों की ओर से, एक हल्की सी पारी पनपती हुई दोनों के बीच। ऑन द फ्रंट खेलने का प्रयास, बल्ले का बाहरी किनारा लगा और सुंदर फील्डिंग के साथ जब तक गेंद वापस आई 1 रन। तो पेंजिम जिमखाना मेंबर्स लीग काफी तहलका मचाता हुआ ये टूर्नामेंट पूरे गोवा में, इस टूर्नामेंट की चर्चा तो बिल्कुल श्रेय जाता है सभी मेंबर्स को जिस प्रकार से अच्छी प्लानिंग के साथ पेंजिम जिमखाना मेंबर्स लीग लेकर आए हैं, बिल्कुल सभी की काबिले तारीफ। ओ बिल्कुल उछाल भरी गेंद, गोली की रफ्तार से गेंद निकल गई विकेट कीपर के दस्ताने में। और इस गेंद को देखकर मुझे बिल्कुल सबसे तेज गेंद जो कि डाली गई थी 2003 वर्ल्ड कप में शोएब अख्तर द्वारा 161.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंग्लैंड के विरुद्ध में, वो थी सबसे तेज गेंद, बिल्कुल लगभग इसी गेंद की तरह। दूसरे नंबर पर ब्रैटली 161.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दूसरे नंबर पर। रन आउट का मौका हो सकता था मगर हल्के से देरी हो गई वहां पर। अगर पंजिम जिमखाना मेंबर्स लीग की बात करें तो निश्चित तौर पर सिद्धार्थ लगभग सबसे तेज गेंदबाज।
संभल कर खेला इस बार। तो चलिए चलते हैं, जब तेज गेंदबाजों का जिक्र हो रहा है, बात हो रही, तो कुछ 5 सबसे तेज गेंदबाजों के बारे में बात करते हैं। तो फिलहाल इस डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई 14 और 14 ओवर की समाप्ति के बाद 67 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम डेम्पो चैलेंजर्स। विनय पालेकर फिर से एक बार गेंदबाजी करेंगे, जो कि शुरुआत करेंगे 15वीं ओवर की। बैकफुट पर खेल दिया है, 1 रन के लिए कवर्स की दिशा में। 1 रन के साथ स्कोर 68 रनों पर धीरे धीरे। अब बिल्कुल गियर बदल कर बल्लेबाजी करनी होगी, मगर उसके साथ साथ अपने विकेट का ख्याल भी रखना होगा। बड़ी जिम्मेदारी किरण शिरवाकर के ऊपर, क्योंकि मुख्तार कादरी की निगाहें बिल्कुल किरण पर, क्योंकि किरण शिरवाकर एक ऐसा बल्लेबाज है जो उनका बल्ला अगर बोलेगा तो निश्चित तौर पर एक अच्छे स्कोर खड़ा कर सकती है टीम डेम्पो चैलेंजर्स। तो फिलहाल इस बल्लेबाज को किस तरह से आउट किया जाए, उसकी प्लानिंग होती हुई विनय पालेकर द्वारा। कदमों का इस्तेमाल किया, फिर से एक बार सुंदर शॉट, मगर वहां पर खिलाड़ी तैनात, कोई फंबल नहीं, बिल्कुल सुंदर तौर के साथ केवल 1 रन पर सीमित किया बल्लेबाजों को। हालांकि उनका इरादा था कि 2 रन के लिए दौड़ पड़े और आर्यन माशेलकर को यहां पर एक अच्छा रोल निभाना होगा। तो आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल अंपायर जो कि आर्यन माशेलकर के शू लेस बांधते हुए। तो इस मैच की, इस गेम की यही खूबसूरती है कि यहां पर कोई ईगो बिल्कुल नहीं है, अपने आप को छोटा नहीं समझते। हालांकि जज है मैदान पर आत्माराम आरोलकर, तभी तो कहते हैं बिल्कुल क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम। फ्लैट गेंद के साथ बिल्कुल अच्छा ड्राइव लॉन्ग ऑन की और वहां पर खिलाड़ी तैनात, कोई फंबल नहीं, 1 रन ही केवल मिलेगा। अंडर आर्म थ्रो आहिस्ता से विनय पालेकर के हाथों में देते हुए खिलाड़ी। जब कभी हल्का सा फंबल होता है या फिर थोड़ा सा देर अगर फील्डर गेंद तक पहुंचता है, तो तब मौका रहता है बल्लेबाजों को 1 रन को 2 रनों में तब्दील करने का। तो फिलहाल उस प्रकार से कोई मौका नहीं देते हुए खिलाड़ी बिल्कुल सुंदर फील्डिंग के साथ अपने मैदान पर रनों को रोकने का प्रयास। जाने दिया गेंद को और बिल्कुल सही नापा, तोला और वाइड का इशारा आता हुआ। शाहरुख खान की तरह अपनी बाहें को फंसा वामन मयेकर ने वाइड का इशारा किया और इस अतिरिक्त के साथ स्कोर जा पहुंचा है 71 रनों पर। बैकफुट पर जोरदार शॉट, बिल्कुल निकल जाएगी मैदान के बाहर। 6 रनों के लिए किरण शिवकर के बल्ले से निकलता हुआ ये नजाकत भरे अंदाज से खेला हुआ शॉट, इट्स अ 6।
फिर से एक बार उसी प्रकार से शॉट, मगर इस बार डिस्टेंस पर रह गए, मगर भाग्यशाली रहे। गेंद 3 खिलाड़ियों के बीचों बीच से जाकर गिरी है और दोनों के साथ स्कोर को पहुंचाया 79 रनों पर। बैकफुट पर खेलने का प्रयास। कल भी मैच है मेरा। तो 15 ओवर की समाप्ति, 15 ओवर की समाप्ति के बाद 79 रन 4 विकेट के नुकसान पर। काफी बाहर, वाइड का इशारा, काफी तेज गति से फिर से एक बार। अब फिलहाल 5.26 की रफ्तार से बल्लेबाजी होती हुई, यानी कि रफ्तार से रन बनते हुए लगभग 5 से 6 रन। तो फिर से एक बार तेज गति के सिद्धार्थ गेंदबाजी क्रम में। तो मैं जिक्र करा था कि 5 सबसे तेज गेंदबाज जो कि क्रिकेटिंग हिस्ट्री में, हाफ वाली पर ड्राइव कवर्स की दिशा में। तो 5वें नंबर पे है मिचेल स्टार्क, जो कि ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज, काफी तेज गति से गेंदबाजी करने में माहिर। 160.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद की थी। और उसके बाद चौथे नंबर पर जेफ थॉमसन, जिन्होंने 160.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से की थी। बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज। तो बिल्कुल जब तेज गेंदबाजों की बात आती है तो निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलियन बाजी मार ली जाती है। जिस प्रकार से लगभग 5 में से 4 गेंदबाज सबसे तेज वो ऑस्ट्रेलियन। 5वें नंबर पर मिचेल स्टार्क, चौथे नंबर पर जेफ थॉमसन, तीसरे नंबर पर शॉन टेट, जिन्होंने 161.1 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से गेंदबाजी की थी, जो कि बिल्कुल दूसरे नंबर पर ब्रेटली के बाद। हालांकि इंजरीज के कारण काफी अरसे तक मैच से बाहर रहे। हल्का सा रोल मिला, बिल्कुल तेज शॉट लगाकर 1 रन आसानी के साथ बटोरते हुए आर्यन माशिलकर। दूसरे नंबर पर हम सभी जानते हैं कि ब्रेटली 161.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सबसे तेज गेंदबाजी की थी न्यूजीलैंड के साथ 2005 के मैच में, और बल्लेबाज थे रॉस टेलर। और सबसे पहले नंबर पर रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर,
जिन्हें अनडिस्प्यूटेड बादशाह कहा जाता है तेज गेंदबाजी का। हाफ वाली पर फिर से एक बार सुंदर ड्राइव, इस बार 2 रनों की कोशिश रहेगी बल्लेबाजों की ओर से, मगर फिर से एक बार तारीफ करनी होगी सभी फील्डरों की, एलपीके 11 के, जिस प्रकार से सुंदर फील्डिंग के साथ केवल 1 रन पर रोकने में कामयाब रहते हैं बल्लेबाजों को। और शोएब अख्तर की बात कर रहा था तो बिल्कुल सबसे तेज गेंदबाजी उन्होंने की थी इंग्लैंड के खिलाफ 2003 वर्ल्ड कप में, और वो डिलीवरी आंकी गई 161.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी कि 102 माइल्स पर आवर। पटकी हुई गेंद फिर से एक बार तेज गति से गोली की रफ्तार से गेंद निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। सिद्धार्थ लंबे ऊंचे कद के और बिल्कुल तेज रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं और अक्सर अपनी गति से बल्लेबाजों को मात देते हैं सिद्धार्थ। सुंदर गेंदबाजी और लाइन और लेंथ बिल्कुल सटीक। तो ओवर की समाप्ति होती हुई 16 और 16 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 21 रन के साथ जा पहुंचा है 85 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। देखना होगा ये बची हुई 4 ओवरों में कितने रन बनाने में सक्षम रहेंगे बल्लेबाज। तो जिस प्रकार से ओमिक्रॉन का वेरिएंट सभी को तंग करता हुआ और काफी तेज गति से केसेस बढ़ते हुए कोविड के, एक शेर मेरे जहन में जो कि मुझे सताता हुआ अर्ज करना चाहूंगा। शॉट ऑफ लेंथ काफी मौका था और सुंदर शॉट के साथ ऑन साइड में 1 रन पूरा किया। तो शेर अर्ज है, गौर करिएगा। आज आप पहुंचे हैं हम जिंदगी के उस मुकाम पर, आज आप पहुंचे हैं हम जिंदगी के उस मुकाम पर, दोस्त अहबाब दूर करते हैं हमें थोड़ी सी जुकाम पे। तो फिलहाल 17वें ओवर की शुरुआत और पहली गेंद पर एक सुंदर शॉट लगाकर 1 रन बनाने में कामयाब रहे आर्यन माशेलकर। किरण शिरवाईकर अब स्ट्राइक पर। अब देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह विकेट कीपर फील्डिंग पे तब्दीली लाते हुए। तो बिल्कुल इस बल्लेबाज से थोड़ा सा संभल कर सभी गेंदबाजों को रहना होगा, क्योंकि किरण शिरवाईकर का जब बल्ला बोलता है तो बिल्कुल अच्छे से अच्छा गेंदबाज थर्रा जाता है। फिर एक बार जोरदार शॉट इनसाइड आउट का प्रयोग, गैप में खेल दिया गेंद, बिल्कुल सुंदर फील्डिंग के साथ, हालांकि हल्की सी फंबल हुई, 2 रन आसानी के साथ मिलेंगे।
इन दोनों के साथ अब गियर बदलकर बल्लेबाजी करते हुए किरण शिरवैकर तोड़फोड़ के बल्लेबाजी करेंगे निश्चित तौर पर। अब उनके इरादे बिल्कुल दिखाते हुए कि अब किरण शिरवैकर नहीं रुकेंगे। काफी तेज गति से गेंद बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा, एक रन आसानी के साथ मिल सकता है या फिर 2 रनों का प्रयास रहेगा, मगर विकेट कीपर ने सुंदर दौड़ लगाकर केवल 1 रनों पर सीमित किया। पूरी तरह से चूके हालांकि फुटवर्क पर और नजरें हटा ली थी गेंद से। किरण शिरवैकर इस 1 रन के साथ स्कोर 89 रनों पर जा पहुंचा है। इक्का दुक्का रन के साथ फिर से एक बार निश्चित तौर पर एक अच्छी साझेदारी अब दिखाई देती है, मगर अब बल्लेबाजी करनी होगी बेहतरीन, यानी कि हर एक गेंद पर कड़ा प्रहार करना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को। कदमों का इस्तेमाल किया इस बार, इरादे बिल्कुल साफ, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा। 1 रन के साथ आर्यन माशेलकर 2 रन की कोशिश करते हुए, मगर इस 1 रन के साथ इसको जा पहुंचा है 90 रनों पर। जिस प्रकार की बल्लेबाजी हो रही है निश्चित तौर पर यही लग रहा है कि लगभग 115-120 रन तक पहुंचेगा लक्ष्य, टारगेट, यानी कि एक्सपेक्टेड स्कोर एज अ टारगेट। मगर देखना होगा, जब तक किरण शिरवैकर है कुछ भी कहना नामुमकिन, मुश्किल, क्योंकि ये बल्लेबाज बिल्कुल जब लंबे लंबे शॉट लगाए तो निश्चित तौर पर 120 के पार 130-35 तक भी स्कोर जा सकता है, वो क्षमता रखता है बल्लेबाज। ओ ये देखिए पहली गेंद पर बिल्कुल कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को भेजा मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। इस बार ड्राइव कर दिया है लॉन्ग ऑन की ओर, खिलाड़ी वहां पर तैनात, 2 रन की कोशिश रहेगी, मगर सुंदर फील्डिंग के साथ कोई मौका नहीं दिया। बिल्कुल फुल मार्क्स उस फील्डर के लिए जिस प्रकार से सुंदर फील्डिंग की। इस 1 रन के साथ 17 ओवरों की समाप्ति, 17, यानी कि बिल्कुल आ चुका है खतरा अब टीम एलपी के 11 पर। क्या फिर रोक पाएंगे किरण शिरवैकर को, या फिर किरण शिरवैकर अपनी खूबसूरत बल्लेबाजी के साथ स्कोर को पहुंचाएंगे 130 के पार। फिर अंपायर ने कहा ओवर, स्कोर हुआ है 97 for 4। ऐसे लगा था कि संघर्ष कर रहे हैं, मगर अब बिल्कुल रुककर साथ निभा रहे हैं किरण शिरवैकर का। और क्या ही जोड़ी, बिल्कुल एक लंबे लंबे शॉट लगाता हुआ बल्लेबाज किरण शिरवैकर, जिन्हें लेफ्ट हैंड बैटिंग सेंसेशन, और दूसरा सीधे हाथ के बल्लेबाजी करता हुआ हर एक गेंद पर 1 रन के साथ ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक किरण शिरवैकर को देता हुआ आर्यन माशेलकर। तो 17 ओवर की समाप्ति 97 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बची हुई 3 ओवर यानी कि 18 गेंदों में देखना होगा कितने रन बनाने में सक्षम रहते हैं किरण शिरवैकर। तो फिलहाल मोर्चा खोल दिया है गेंदबाजों के विरुद्ध में, बिल्कुल हाथ खोलकर लंबे लंबे शॉट लगाते हुए किरण शिरवैकर। हल्की सी मुस्कुराहट आप देख सकते हैं मुख्तियार कादरी के चेहरे पर, मन ही मन खुशी के लड्डू फूटते हुए, क्योंकि दायित्व है उनके कंधों पर कि टीम को किस प्रकार से फाइनल तक ले जाकर पहुंचाया जाए। तो एक जिम्मेदारी उनके कंधों पर डेम्पो चैलेंजर्स की टीम की नेतृत्व करते हुए कप्तान मुख्तियार कादरी।
ब्लू आई बॉय वन मैन आर्मी के नाम से पूरे गोवा में मशहूर मुख्तियार कादरी अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी कप्तानशिप के लिए मशहूर। मनीष काकोड़े, यानी कि जिस प्रकार से यॉर्कर लाइन डिलीवरी का कोई तोड़ नहीं था, मगर एमएस धोनी ने हेलीकॉप्टर शॉट लाकर बिल्कुल यॉर्कर लाइन पर बाउंड्री लगाने का सिलसिला जो शुरू किया है, तो देखना होगा कि फिर से एक बार सबसे कामयाब गेंदबाज यानी कि मनीष काकोड़े को गेंदबाजी के लिए लाया गया है कि इस जोड़ी को तोड़ने के लिए खास तौर पर, तो बिल्कुल ये अच्छी सोच के लिए तारीफ करनी होगी कप्तान एलपीके 11 के मनीष काकोड़े, जो कि सबसे घातक गेंदबाज अब तक का। हालांकि 4 विकेटें गिरी हैं, मगर 3 विकेटें मनीष काकोड़े को मिलती हुई। जोरदार शॉट, गेंद हवा में, कैच का मौका, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, कोशिश की मगर गेंद तक नहीं पहुंच पाए। इसी बीच दौड़ लगाकर 2 रन पूरे किए किरण शिरवेकर ने और स्कोर को पहुंचाया 99। और बिल्कुल सचिन तेंदुलकर की जर्सी नंबर 99 पर स्कोर को पहुंचाया किरण शिरवेकर। जोरदार शॉट, इस बार सही पकड़ बनाई, गेंद को भेजा मैदान के बाहर, साइड स्क्रीन पर जा गेंद टकराई। 6 रनों के लिए 100 रन पूरे होते हुए और उसको जा पहुंचा 105 रनों पर इस लंबे शॉट के साथ। बिल्कुल टेम्पो चैलेंजर्स ने पेंजिम के प्रभु देवा को लेकर आए हैं और नाच कर बिल्कुल खुशी का इजहार करते हुए। लंबा शॉट 105 रनों पर, अभी भी 16 गेंदें आनी शेष। काफी तेज गति से गेंद, बिल्कुल सही पकड़ बनाई गेंद पर, सुंदर ड्राइव के साथ इस 1 रन के साथ किरण का निजी स्कोर 33 रनों पर जा पहुंचा है। 33 ने अब केवल 2 रन यह बल्लेबाज बना सकता है, उसके बाद अब लौटना होगा उन्हें पवेलियन। जिस प्रकार से रूल्स एंड रेगुलेशन है पंजिम जिमखाना मेंबर्स लीग का, एक बल्लेबाज ज्यादा से ज्यादा 35 रन बनाकर आ सकता है, 34 रन पर बड़ा शॉट लगा सकता है। बिल्कुल कोशिश रहेगी किरण शिरवेकर अब इक्का दुक्का रन के साथ नहीं, बल्कि एक लंबे सिक्सर के साथ वापसी करने की। तो फिलहाल आर्यन माशेलकर फिर से एक बार राहुल द्रविड़ की तरह बिल्कुल एक काम, कूल, कलेक्टिव, रिलैक्स फ्रेम ऑफ माइंड में बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइक पर। मनीष काकोड़े गेंदबाजी क्रम में और बल्ले का बाहर किनारा लगा और इस 1 रन के साथ स्कोर को पहुंचाया 107 रनों पर। 33 पर किरण शिरवेकर एक जोरदार शॉट लगा सकते हैं या फिर केवल 1 रन के साथ फिर भी एक जोरदार शॉट की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि उनका निजी स्कोर हुआ है 33 रन 33। बिल्कुल हाफ वाली पर कड़ा प्रहार, गेंद निकल जाएगी 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ अपना निजी स्कोर 37 पर किरण शिरवेकर लौटेंगे। बिल्कुल तालियों की गड़गड़ाहट आप देख सकते हैं, खुशी का इजहार मनाते हुए टेम्पो चैलेंजर्स के डगआउट में बिल्कुल एक जान में जान आ गई है एक लंबा शॉट लगने के बाद। व्हाट अ फोर!
बिल्कुल लाजवाब पारी खेल अपनी वापसी की। 19 गेंदों में 37 रन बनाए किरण शिरवाकर ने, जिनमें शामिल थे 3 लंबे छक्के और 1 खूबसूरत चौका। स्कोर हुआ है नेल्सन, यानी कि जब कभी नेल्सन का फिगर होता है तो डेविड शेफर्ड अंपायर एक पैर पर खड़े हो जाते थे और अशुभ मानते थे इस स्कोर को। तो फिलहाल हमारे दोनों ही अंपायर दोनों ही कदमों पर खड़े हुए। 19 ओवर की शुरुआत होती हुई वल्लभ को लाया गया है गेंदबाजी करने में और सामना करेंगे बैकफुट पर बिल्कुल 1 रन के साथ स्कोर को पहुंचा है 112 रन पर। माफी चाहूंगा क्योंकि स्कोर डिजिटल स्कोरबोर्ड ने धोखा दे दिया। 18 ओवर की समाप्ति, अब उसको जा पहुंचा है 112 रनों पर 4 विकेट के नुकसान के बाद। डीजे carry on with your good work. All the best for your future assignments. In the meantime, the beginning of 19th over on the bowling mark is Anish. This time from the pavilion end, will be bowling to the new batter. On the striking position is Pranav Dhuri. After they retired from scoring 37 runs, Kiran Shirwakar is Pranav Dhuri on strike. The score is 112, still 2 overs to come. Just allow the ball to go pass through him, rightfully guessed and wide signal. The margin for error in the leg side is quite narrower than as compared to the offside. The official umpire will consider slight deviation in the offside but not in the leg side. They are very strict on the leg side. However, with the help of this extra, the score moves up to 113 runs. Still 12 deliveries remaining. A lofted shot. Oh, a hand to it as if he's just plucking the coconut from the tree. A short coconut tree, of course, but the ball is just coming down. He must have hurt himself. Oh, definitely he is looking hurt. He's asking for the help. First aid box. He wants to just come out of the ground maybe. That has hurt him. Aryan Marshall on the nose striker's head, looking quite confident with his ability. Now singles is very constant from his bat. However, Pranav Dhuri is trying to just time the ball because they've got less deliveries now and they need to carry on the momentum like how Kiran Shirwakar was batting. Oh, in the leg side, slight fumble there from the wicketkeeper as well. Those will be 2 runs adding up to the total to take the score tally to 116 runs. 117 correction from our scorer Pratik Narvekar. Dimbo Challenge is always a challenging team under the captainship of Mukhtar Kadri.
Was going for the big shot, but this time the field is getting settled underneath it, and what will be a simple looking catch in the mid-on region. That's the end of Aryan Mashelkar after batting for a long time. 117 for the loss of 5 in the 19th over. And the official says he's out. A good looking shot, good timing as well. Fumble there from the field, and the ball will race away. Will win the race for sure. Definitely a cracking beauty after a long time. But the ball, good boundary to see here from Dempo Challenges. What a shot for fence. Number 5. Anish on the bowling mark. Oh, nicely timed, played straight down the ground to long off fielder. There is a fielder, will cut it off. He does well, beautiful fielder. In the meantime, direct right on the stumps, and he's out. That's the fall of the wicket, number 6. Bang right on the target. He hits the bull's eye. DJ. तो बिल्कुल काफी रोचक रोमांचक मैच होता हुआ और गेंद और बल्ले के बीच का संघर्ष काफी बढ़िया इन दोनों टीमों के बीच एक युद्ध होता हुआ। फिर से एक बार संभल कर खेला, बिल्कुल दूर होने की कोशिश रही। ये पहला रन तेज गति से और दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं प्रणव दूरी, बिल्कुल दौड़कर पूरे रन करते हुए और तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती हुई डेम्पो चैलेंजर्स के डगआउट से एक स्कोर जहां पहुंचा है तेजी से अब 124 रनों पर। जो कि 19वीं ओवर ये जारी है। तो फिर से एक बार हमारे डोमिनिक ब्रिगांजा ने हल्की सी गलती कर दी है डिजिटल स्कोर पे 19 ओवर्स। संभल कर खेला इस बार इस एक रन के साथ 19 ओवरों की समाप्ति और 19 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 125 रन 6 विकेट के नुकसान पर। डीजे
तरह से क्रिकेट में गुगली गेंद फेंकी जाती है, पूरी तरह से चकमा दे देती है बल्लेबाज को। तो फिलहाल हमारी स्कोरर सीता भारद्वाज ने गुगली खाई है। सुबह का मैच दोपहर को समझकर और दोपहर का मैच सुबह समझकर बिल्कुल गुगली के साथ आखिरकार आ पहुंची है हमारे स्कोरिंग बॉक्स में। तो जरूर नहीं कि बल्लेबाज गुगली खाकर चकमा खा जाते हैं, कभी कभार स्कोरर, कमेंटेटर और यूट्यूबर भी बिल्कुल गुगली के शिकार होते हैं। तो फिलहाल आखिरी ओवर लेकर दूर वाली छोर से लंबे ऊंचे कद के सिद्धार्थ, तेज गेंदबाज, स्कोर 125, 6 विकेट के नुकसान पर। जोरदार शॉट लगाने का प्रयास, बिल्कुल सुंदर टाइमिंग के साथ गेंद को भेज दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में। 2 रन दौड़कर पूरे किए, आसानी के साथ पूरे कर लेंगे। हर एक रन के साथ तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती हुई टेम्पो चैलेंजर्स के डगआउट में। और बिल्कुल अपनी कुर्सी छोड़ उठ चुके हैं मुख्तार कादरी। अगर अनुमति होती है अंपायर की ओर से तो बिल्कुल मैदान में भी उतर जाते हैं मुख्तार कादरी। तो फिलहाल बाउंड्री के बाहर हिम्मत अफजाई करते हुए प्रणव धूरी का, और प्रणव धूरी बिल्कुल जबरदस्त फॉर्म में नजर आते हुए इन दोनों के साथ इसको जा पहुंचा है 127 रनों पर। बची हुई अब 5 गेंदें आनी शेष। हल्की सी फील्डिंग में तब्दीली करते हुए तेज तर्रार, तेज रफ्तार के गेंदबाज सिद्धार्थ। पटकी हुई गेंद, बिल्कुल अपर कट का बिल्कुल उपयोग किया था यहां पर प्रणव धूरी ने, मगर सुंदर फील्डिंग के साथ केवल 1 रन पर सीमित किया बल्लेबाजों को। इस 1 रन के साथ अब धीरे से इसको जा पहुंचा 128। निश्चित तौर पर 130 के पार जाएगा लक्ष्य, इसमें कोई दो राय नहीं। तो फिलहाल रनों को सीमित करने का बिल्कुल प्रयास होता हुआ सिद्धार्थ की ओर से सुंदरता से सही दिशा में लाइन और लेंथ को ध्यान में रखकर गेंदबाजी होती हुई सिद्धार्थ की दूर वाले छोर से। ये आखिरी ओवर, बची हुई अब 4 गेंदें। जोरदार शॉट लगाने का प्रयास, रनआउट का मौका पूरी तरह से चूके, और इस 1 रन के साथ बिल्कुल इसको जा पहुंचा 129 रनों पर। तो प्रणव धूरी स्ट्राइक पर, बची हुई अब 3 गेंदें, स्कोर 129। एक लंबे शॉट की जरूर कोशिश रहेगी। और बिल्कुल ब्लॉक होल में की थी, लोअर फुल टॉस में खेल दिया। फिर से एक बार लॉन्ग ऑन की दिशा में, इस बार हाना दोनों के बीच होता हुआ और एक आसानी के साथ रनआउट का मौका, और रनआउट के रूप में बल्लेबाज लौटे हैं प्रणव धूरी। बिल्कुल काफी कोशिश की, काफी भागम दौड़ की उन्होंने, और स्कोर को पहुंचाया 130 रनों पर। तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ टीम इस टूर्नामेंट के पीछे अपनी कड़ी मेहनत, अपने संघर्ष, अपनी डेडिकेशन से काम किया है, उन सभी की तारीफ करनी होगी। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से बैनर्स सभी स्पॉन्सर्स के लगाए गए हैं अतराफ में, और उसके साथ साथ पंजिम जिमखाना मेंबर्स लीग पूरी शान से झंडे लहराते हुए मैदान के इर्द गिर्द, बिल्कुल एक खूबसूरत नज़ारा। और मेरा सौभाग्य है कि इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ने का मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा मेरे दोस्त सरफराज शाह, अजय साहब का और ट्रेंच साहब का, जो जिन्होंने मुझे मौका दिया इस शानदार टूर्नामेंट के साथ जुड़ने का। उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। तो फिलहाल ये आखिरी गेंद और स्कोर हुआ है 2 गेंदें आनी शेष। माफी चाहूंगा। पैच से टकराई और ये आउट। एलबीडब्ल्यू का इशारा होता हुआ, यानी कि फिर से एक बार
बैक टू बैक विकेटें गिरती हुई स्कोर वहीं पे रुका हुआ 130 अब 8 विकेट के नुकसान पर। एक सौ तीस पर अब 8 विकेटों का पतन। आखिरी गेंद इस एक रन के साथ स्कोर को पहुंचा 131 और 132 का लक्ष्य रहेगा 132 टू विन। तो देखना होगा कि 120 गेंदों में क्या एलपीके 11 132 रन बनाकर एक शानदार जीत दर्ज कर पाएंगे और अपनी टीम को फाइनल्स में प्रवेश कर पाएगी, या फिर अपनी अच्छी गेंदबाजी अपनी अच्छी फील्डिंग के साथ एलपीके 11 को रोकने में कामयाब रहेगी डिम्पो चैलेंजर्स। तो ये आगे का हाल देखना होगा इस इनिंग के बाद। इसी बीच अंपायर ने कहा इट्स टाइम एंड ओवर। डीजे
टेस्ट 132 के लक्ष्य का पीछा करती हुई टीम एलपी के 11। तो देखना होगा किस प्रकार से उनका रवैया रहता है, किस प्रकार से तो फिलहाल पहली गेंद पर खेलने का प्रयास मिड ऑफ की ओर फील्डर की तैनातगी। मुख्तियार कादरी बिल्कुल कप्तान डेम्बो चैलेंजर्स के एक महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे इस मैच में। अपना अनुभव को लाना होगा इस मैच में। सेमीफाइनल का मुकाबला टीम जीतने वाली फाइनल में प्रवेश कर जाएगी। जोरदार शॉट, गेंद हवा में, कैच का मौका और एक आसान से कैच के साथ पहली सफलता मिलती हुई डेम्बो चैलेंजर्स को पहली ही ओवर में, यानी कि तीसरी गेंद पर पहली सफलता मिलती हुई मुख्तियार कादरी को। यानी कि तीसरी गेंद पर पहली सफलता प्राप्त करते हुए और अपनी टीम के लिए दिलाते हुए कप्तान मुख्तियार कादरी डेम्बो चैलेंजर्स बिल्कुल पूरे जोश के साथ इस मैच में दिखाई देते हुए। दूसरी गेंद पर एक सफलता पहले विकेट के। तो फिलहाल संभल कर खेलने का प्रयास, देवीदास खोलकर उतरे हैं मैदान पर। कप्तान अनूप आउट होकर पवेलियन वापस। पटकी हुई गेंद खेलने का प्रयास हल्की सा सफल होकर, मगर वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर आत्माराम आरोलकर की ओर से। दो ऑफिशियल अंपायर आज के दिन बिल्कुल बेहतरीन अंपायरिंग की भूमिका में नजर आते हुए। वामन मयकर अगर उनका जिक्र करें तो बिल्कुल टाइम टू टाइम वक्त के काफी पाबंद और मोस्ट डिसिप्लिन अंपायर के रूप में देखे जाते हैं गोवा के सरजमीन पर। तो फिलहाल अपने मिशन के साथ बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद हवा में काफी देर तक मगर गैप में निकल गई डीप थर्डमैन की दिशा में केवल एक रन के लिए। देवीदास खोलकर बिल्कुल एक अनुभवी बल्लेबाज, लंबी पारी खेलनी होगी उन्हें और एक अच्छी शुरुआत देनी होगी। हालांकि काफी जल्द ही पहले विकेट की सफलता मिली है डेम्बो चैलेंजर्स की, यानी कि दूसरी गेंद पर कप्तान की विकेट की सफलता, मगर अब एक साझेदारी यहां पर जरूरी रहेगी बल्लेबाजों को। जब कभी साझेदारी बनती है T20 के फॉर्मेट में निश्चित तौर पर रन बनते हैं इक्का दुक्का रन के साथ। पटकी हुई गेंद बिल्कुल साइन सटीक सुंदर गेंदबाजी के साथ डॉट कराया गेंद को और बिल्कुल प्रतिक्रिया देखिए, बिल्कुल अपने हाथों को सर पे रखा कि कितना करीबी मामला था ये दर्शाते हुए मुख्तियार कादरी। ब्लू आई बॉय और वन मैन आर्मी के नाम से जाने जाते हैं मुख्तियार कादरी, जो कि T20 के फॉर्मेट में या फिर लिमिटेड टेनिस क्रिकेट का मैच हो बिल्कुल छा जाते हैं मैदान पर।
बैकफुट पर हल्के हाथों से स्टीयर कर दिया, 1 रन के लिए नहीं मौका रहेगा। लगातार डॉट गेंदों के साथ पहले ओवर की समाप्ति होती हुई और पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 2, 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर। दूसरी ओवर की शुरुआत, पहली गेंद पर कड़ा प्रहार मगर सुंदर फील्डिंग होती हुई पॉइंट की दिशा में। देवीदास खोलकर जो कि स्ट्राइक पर और संजय नेत्रावलकर जो कि 9 सेकंड पर गेंदबाजी के क्रम में लगा है। गेंदबाज मेहांक धारवाड़कर तेज गति से गेंदबाजी करते हुए मेहांक जोरदार अपील कॉट बिहाइंड की। केवल मेहांक ने आवाज सुनी है, न कि किस विकेट कीपर और खिलाड़ियों ने। जोरदार पूरे जोश के साथ, पूरे यकीन के साथ अपील करते हुए कॉट बिहाइंड के, मगर अंपायर ने कहा नॉट आउट, नकारा। तो बिल्कुल जिस प्रकार से शुरुआत दी है मुख्तियार कादरी ने, द कैप्टन हु लीड्स फ्रॉम द फ्रंट एंड लीव अ एग्जांपल, और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए मेहांक धारवाड़कर जोरदार शॉट लगाने का प्रयास, फिर से एक बार पूरी तरह से चूक के बिल्कुल सुंदर गेंदबाजी होती हुई। अक्सर संभल कर बल्लेबाजी करते हैं देवीदास खोलकर, जिस प्रकार से उन्हें अक्सर कहा जाता है मिस्टर रिलायबल। टीम उन पर निर्भर हो सकती है, ये काबिलियत रखते हैं देवीदास खोलकर, मगर जब जम जाते हैं तो बिल्कुल अच्छे से अच्छे गेंदबाजों के छक्के छुड़ा देते हैं देवीदास खोलकर। मगर टिकना होगा क्रीज पर, एक साझेदारी बनानी होगी। जाने दिया गेंद को। अक्सर कोच कहते हैं कि अच्छा बल्लेबाज वो है जो गेंदों को नाप तोलकर जाने देता है, तो उसी का एक नजारा यहां पर दिखाई देता हुआ देवीदास खोलकर की ओर से। जानते हैं कि बड़ी जिम्मेदारी है और टिक कर कम से कम 35 रनों का योगदान देना होगा उन्हें। इस बार सही पकड़ बनाई और गेंद को भेजा गोली की रफ्तार से कवच की दिशा में 4 रनों के लिए। व्हाट अ शॉट फ्रॉम देवीदास खोलकर, हाथ खोलकर बल्लेबाजी। इस बार ड्राइव किया मगर वहां पर खिलाड़ी तैनात था, जब तक गेंद को उठाकर थ्रो करते और डायरेक्ट थ्रो, नॉट आउट कहा। बिल्कुल सही निगाहें, सही निर्णय, अच्छी पोजीशन में थे ऑफिशियल अंपायर वामन मयेकर। देखिए अनुमान लगाया, हालांकि ये अगर इंटरनेशनल अंपायर होती तो बिल्कुल हवा में स्क्वायर बनाकर थर्ड अंपायर की ओर इशारा होता, मगर हमारे गोवा की अंपायरों की तारीफ करनी होगी, टीवी अंपायर की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
बता दें तो निश्चित तौर पर आईपीएल में सुंदर अंपायरिंग के लिए जाने जाते हैं यशवंत बर्टे ऑफिशियल अंपायर और सैयद खलीद। तो बिल्कुल गोवा के लिए ये एक फख्र की बात। तो फिलहाल 2 ओवरों की समाप्ति और 2 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो गेंदबाजी में हल्का सा बदलाव करते हुए कप्तान अपनी जगह पर नकुल को लाए हैं गेंदबाजी के लिए, जो कि शुरुआत करेंगे तीसरी ओवर की। स्कोर हुआ है 7 1 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल एक हल्की सी साझेदारी जो कि अब दिखाई देती हुई क्रीज पर। 132 रनों का पीछा करती हुई टीम एलपी के 11 इस सेमीफाइनल में। हाफ वॉली पर जोरदार शॉट, गेंद हवा में निकल जाएगी फिर से एक बार 4 रनों के लिए शायद, और बिल्कुल सही पकड़ बनाई, गेंद निकली बल्ले के बीचों बीच से और सुंदरता के साथ फिर से एक बार देवीदास खोलकर ने खेला, हाथ खोलकर 4 रनों के लिए। तो नकुल की पहली गेंद पर जोरदार प्रहार, संभल कर खेला इस बार कलाई की बदौलत, बिल्कुल गेंद को भेज दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में। 2 रनों का की कोशिश करते हुए मगर आखिरकार सुंदर फील्डिंग के साथ केवल 1 रन पर अपने आप को सीमित किया। तो बिल्कुल एक कंट्रोल एग्रेशन का बखूबी नमूना पेश करते हुए यहां पर इस मैच में देवीदास खोलकर बिल्कुल शानदार बल्लेबाजी के अब क्रम में नजर आते हुए हर एक ओवर में एक एक चौके के साथ रनों की गति को बढ़ाते हुए। तो फिलहाल लोअर फुल टॉस पे जोरदार शॉट लगाने का प्रयास, मगर टाइमिंग पर चुके, मगर फिर भी 1 रन अवश्य मिलेगा संजय नेत्रवलकर को। इस 1 रन के साथ धीरे से स्कोर जा पहुंचा है 13 रनों पर, उसमें 2 चौके शामिल देवीदास खोलकर की ओर से। संभल कर खेला, केवल हल्के हाथों से 1 रन के लिए जानबूझकर उस दिशा में खेल दिया। तो यही खूबसूरती है देवीदास खोलकर की, जब टिक जाते हैं और इक्का दुक्का रन के साथ बिल्कुल एक कंट्रोल एग्रेशन का बखूबी नमूना पेश करते हैं, जो कि T20 के फॉर्मेट में एक जरूरी कदम माना जाता है। इस प्रकार से जमने का प्रयास बखूबी होता हुआ दोनों की बल्लेबाजों की ओर से। फ्लाइटर 1 फिर से एक बार खेल दिया, इस बार संजय नेत्रवलकर ने लॉन्ग ऑन की दिशा में। तो लगभग 6.6 रन प्रति ओवर, यानी कि लगभग 7 रन बनाने होंगे हर एक ओवर में, और उसी प्रकार से बल्लेबाजी होती हुई। ड्राइव किया इस बार, फिर से एक बार गैप में 1 रन के लिए, हर एक गेंद के साथ 1-1 रन बनाकर मोमेंटम को बरकरार रखते हुए। तो फिलहाल इस 1 रन के साथ इसको जा पहुंचा है 16 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर, और ओवरें समाप्त हुई हैं 3। ऑफिशियल अंपायर ने फिर से एक बार कहा दैट्स दी ओवर। गेंदबाजी करेंगे, जो कि शुरुआत करेंगे चौथी ओवर की। स्कोर हुआ है 16 1 विकेट के नुकसान पर। 132 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई टीम एलपी के 11 उनका मुकाबला होता हुआ डेम्पो चैलेंजर्स के साथ। ये दूसरा सेमीफाइनल, एक टीम जो कि फाइनल में प्रवेश कर चुकी है प्रेस्कॉन पैंथर्स, जो कि गणतंत्र दिवस पर बिल्कुल मार्चिंग के साथ फाइनल में उनका प्रवेश। चौथी ओवर की शुरुआत स्ट्राइक पर देवीदास खोलकर।
संभल कर खेलने का प्रयास, इस बार हल्की सी अपील, वहां पर बिल्कुल काफी करीबी मामला था। जिस प्रकार से स्विंग अपने हाथ से इशारा कर बता रहे हैं कि इस प्रकार की स्विंग हुई थी और पूरी तरह से चकमा खा कर रह गए थे देवीदास खोलकर। तो केवल एक अच्छी गेंद बल्लेबाज का खेल तमाम कर सकती है। तो यही खूबसूरती है इस मैच की, यानी कि क्रिकेट की मैच के। तो फिलहाल कॉमेडी बॉक्स में मैं नदीम अहमद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और जाने दिया इस बार गेंद को, बिल्कुल कोई छेड़छाड़ नहीं की देवीदास खोलकर ने। मेरे साथ कॉमेडी बॉक्स में सीता भरद्वाज, प्रतीक नार्वेकर और मेरे बिल्कुल पीछे बैठे हुए डोमिनिक ब्रगैंजा। यूट्यूब के माध्यम से फोटोसोनिक का बिल्कुल एक बेहतरीन प्रसारण, ब्रॉडकास्टर्स। हाफ वॉली पर बिल्कुल ब्लॉक होल पर डालने का प्रयास किया था, मगर संभल कर खेले पूरे बल्ले के साथ। जब ये बल्लेबाज टिक जाता है तो बिल्कुल एक दीवार की तरह टिक जाता है, तो तभी तो उन्हें कहते हैं मिस्टर रिलायबल देवीदास खोलकर। पटकी हुई गेंद, मगर लाइन बिल्कुल सटीक किरण शिरोइकर की, कोई रूम नहीं। जब कभी रूम होता है तो बल्लेबाज बिल्कुल बूम के साथ अच्छा शॉट लगाता है। किस प्रकार से खेले, बिल्कुल स्टंप टू स्टंप, और खास तौर पर मिडल स्टंप पर गेंदबाजी करते हुए किरण शिरोइकर। ये चौथी ओवर जो कि जारी, उसको रुका हुआ 16 रनों पर, बिल्कुल रनों को सीमित करते हुए किरण शिरोइकर। हाफ वॉली पर बिल्कुल कलाई के बदल गेंद को भेज दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा की ओर। जब तक गेंद आती 2 रन आसानी के साथ बटोर लिए अपनी टीम के लिए, स्कोर को पहुंचाया 18 रनों पर। इस बार एलपी के 11 के डगआउट से तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती हुए, यानी कि बल्लेबाजों की हिम्मत अफजाई करते हुए सभी खिलाड़ी। गुड शॉट, कभी शाबाश की आवाज आती हुई, कभी बड़े चलना, यानी कि अच्छी तरह से बल्लेबाजी होती हुई। जाने दिया इस बार फिर से एक बार पटकी हुई गेंद डॉट गेंद के साथ। चौथी ओवर की समाप्ति, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद इसको जा पहुंचा है 18 रनों पर। 1 विकेट की सफलता जो कि अब तक डेम्पो चैलेंजर्स को मिली है। फिर से एक बार अंपायर वामन मयकर ने कहा, दैट्स दी ओवर। दो रन दिए हैं चौथी ओवर में। 5वीं ओवर की शुरुआत, नकुल फिर से एक बार गेंदबाजी क्रम में डाइव लगाकर सुंदर फील्डिंग होती हुई पहली गेंद के साथ 1 रन, और 1 रन के साथ स्कोर 19 रनों पर जा पहुंचा है। कल के दिन फाइनल का, और कल के दिन कमेंट्री बॉक्स में रहेंगे तुषार नाइक और राल तोब्बर आणि वाल वाटीबर, यानी कि मालवनी क्रिकेट कमेंटेटर बादल चौधरी। कल मेरी छुट्टी कर दी गई है फिलहाल। ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा सभी टीमों को। संभल कर खेला पॉइंट की दिशा में, हल्के हाथों से 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया बल्लेबाजों ने। तो इसी प्रकार की बल्लेबाजी अक्सर किया करते हैं देवीदास खोलकर, इक्का दुक्का रन के साथ एक मोमेंटम को बिल्कुल लगातार जारी रखते हैं।
फ्लाइटर गेंद लो फुल टॉस पे खेल दिया है केवल। अगर कड़ा शॉट मार दे बिल्कुल कस कस शॉट लगता तो निश्चित तौर पर कम से कम 4 रन जरूर मिलते, मगर आप देख सकते हैं कि वो गेंद हवा में और एक टिप्पा खाने के बाद सीमा रेखा पार, यानी कि लॉफ्टेड शॉट खेल दिया है, बिल्कुल सही नापा तोला और जानते थे कि वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, तो डीप मिड विकेट की दिशा में इस चौके के साथ स्कोर हुआ है 25 एक विकेट के नुकसान पर, और ये 5वीं ओवर जो की जारी है। एक इंटरनेशनल बल्लेबाज के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जिन्होंने हर एक गेंद पर एक एक रन बनाकर अपनी सेंचुरी बनाई, उसमें ना एक चौका शामिल है ना एक सिक्सर, तो वो बल्लेबाज हैं माइकल बेवन ऑस्ट्रेलिया के। बैकवर्ड पर संभल कर फिर से एक बार सीधे बल्ले के साथ अक्सर खेलते हैं देवीदास खोलकर। इस एक रन के साथ इसको धीरे से 26 रनों पर, बिल्कुल जैसे ही देखा पिछली गेंद पर मौका था शॉट ऑफ लेंथ, और बिल्कुल गेंद को दिशा दी मिड विकेट की ओर और गेंद को भेजा सीमा रेखा पार। तो जरूरी नहीं कि हर एक गेंद पर केवल एक रन ही बनाते हैं, मगर जब मौका मिलता है तो मारते हैं चौका देवीदास खोलकर। तो हल्की सी हरकत ने बिल्कुल थोड़ा सा परेशान किया बल्लेबाज संजय नेत्रावलकर को, जो कि स्ट्राइक पर मौजूद, बखूबी साथ निभाते हुए देवीदास का। पटकी गेंद बैकफुट पर हल्की से बल्ले का शायद मिला और गेंद निकल गई, बिल्कुल डाइव लगाकर रोकने की कोशिश, अरे 4 रन। इस ओवर में लगभग 2 चौके आते हुए और हल्का सा नाराज होते हुए नकुल कोशिश की थी, मगर गेंद बिल्कुल गोली की रफ्तार से निकल गई। बिल्कुल सिंघम के अजय देवगन की तरह अजय ने डाइव लगाई थी, मगर गेंद को रोकने में असफल, और इस 4 रन के साथ स्कोर तेजी से जा पहुंचा है 30 रनों पर। 5 ओवर की समाप्ति, स्कोर 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टीचे से क्रिकेट आकर्षित करता है क्रिकेटरों को। मेरे साथ वास्को से आज जुड़े हैं फरहाद खान, उनका तहे दिल से स्वागत। अक्सर इन मैचेस को देखने के लिए अपना कीमती समय देते हैं, तो ये बिल्कुल उनका प्रेम दर्शाता है जिस प्रकार से क्रिकेट प्रेमी है फरहाद खान, उनका स्वागत। और अन्य जो जुड़े हैं उन सभी का भी तहे दिल से स्वागत, योकार, सुस्वागतम, इस्तकबाल, वेलकम। पटकी गेंद बैकफुट पर खेलने का प्रयास स्टील करना चाहते थे, फिर से एक बार अपील करते हुए महंग धारवाड़कर। केवल महंग ने सुना है आवाज और दूसरे किसी ने भी नहीं। तो पिछली ओवर में इसी प्रकार की अपील थी पहली गेंद पर, और दूसरी ओवर में भी इसी प्रकार की अपील करते हुए केवल एक्शन से महंग धारवाड़कर चाहते हैं कि उनकी ओवर में कम से कम 1-2 सफलता जरूर मिले। वो बिल्कुल हल्की से नीचे को रही, मगर संभल कर खेला, सही लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए महंग धारवाड़कर। युवा खिलाड़ी जिस प्रकार से आर्यन माशिलकर, महंग धारवाड़कर बिल्कुल टीनेजर्स।
काफी प्रॉमिसिंग। बिल्कुल अगर क्रिकेट को सीरियसली ले ले तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि इन खिलाड़ियों को जल्दी हम आईपीएल में देख पाएंगे या फिर इंडियन नेशनल टीम में। तो बिल्कुल सही लगन मेहनत के साथ कोशिश करनी होगी कि अच्छा खिलाड़ी बने, और वो जज्बा, वो जोश नजर आता हुआ मेहांग धारवाड़कर में। बिल्कुल सुंदर गेंदबाज। ये देखिए पटकी हुई गेंद गुड लेंथ पर कराई और लाइन बिल्कुल सीधी, हल्की सी ऑफ स्टंप के बाहर। आप देख सकते हैं कवर्स की दिशा में काफी सारे खिलाड़ियों को तैनात किया गया है। डीप थर्ड मैन, गली, पॉइंट, और डीप गली में भी एक खिलाड़ी तैनात। कदमों का इस्तेमाल किया, आगे को आए, पूरी तरह से छूके, फिर से एक बार लगातार डॉट गेंदें कराते हुए। जब कभी डॉट गेंदें होती है तो हल्का सा दबाव बल्लेबाजों पर बनता है, और वो दबाव आप देख सकते हैं संजय नेत्रावलकर पर, और उसी के कारण देवीदास खोलकर दौड़ कर गए उनके पास, कुछ समझाते हुए, कुछ कान मंत्र उनके कानों में कहते हुए कि इस प्रकार से खेले। तो हल्का सा लाचार दिखाई देते हुए संजय नेत्रावलकर सुंदर गेंदबाजी के सामने हेल्पलेस। इस बार बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा और तुरंत कॉल किया वेटिंग। हालांकि देवीदास खुलकर दौड़ना चाह रहे थे, मगर बिल्कुल क्या ही लाजवाब गेंदबाजी होती हुई मेहांक धारवाड़कर की ओर से, जो कि आखिरी ओवर पावर प्ले की रहेगी, मगर कोई पावरफुल शॉट इस ओवर में बिल्कुल देखने को नहीं मिला है। हालांकि पिछली ओवर में 2 चौके जरूर लगे थे। काफी तेज हवाएं बहती हुई और पेल्स नीचे गिराती हुई। बैकफुट पर बिल्कुल बल्ले का बाहर किनारा लगा और गेंद टर्निंग की दिशा में केवल 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ 6 ओवर पावर प्ले की ओवर्स समाप्त। स्कोर जा पहुंचा है 32 रनों पर और 1 विकेट की सफलता जो कि मिली थी दूसरी गेंद पर पहली ओवर में। कंप्लीशन ऑफ 6 overs 32 for 1 over। तो पावर प्ले के 6 ओवरों का खेल समाप्त। अब एक फैलाव देख सकते हैं, जबकि केवल 2 फील्डर 38 सर्कल के बाहर थे, अब 5 रहेंगे और अक्सर बाउंड्री लाइन पे रहेंगे। आप देख सकते हैं लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग में और एक डीप पॉइंट की दिशा में, यानी कि कुल मिलाकर 5 खिलाड़ी। अजय गेंदबाजी क्रम में बैकफुट पर खेलने का प्रयास, काफी नीचे को रही गेंद और काफी बाहर। वाइट का इशारा आता हुआ आत्माराम आरोलकर ऑफिशियल अंपायर्स के द्वारा। कल के दिन यही दोनों अंपायर मैदान पे रहेंगे, वामन मयेकर साहब और आत्माराम आरोलकर उनके साथ। फाइनल का मुकाबला होगा कल के दिन। अजय की गेंदबाजी, जोरदार शॉट लगाने का प्रयास, बार अच्छी स्टंपिंग के साथ अपील। देवीदास खोलकर बिल्कुल फिर से एक बार कुछ कहने के लिए कदम बढ़ाते हुए अक्सर डॉट गेंदें करा रहे हैं संजय नेत्रावलकर, जो कि स्ट्राइक पर स्वीप शॉट खेलने का प्रयास, मगर बिल्कुल पूरी तरह से चूके
अनुमान नहीं लगा पा रहे कि किस प्रकार से गेंद आ रही है, कभी नीचे कभी उच्च ऊंचाई पर उछलती हुई गेंद परेशान करते हुए संजय को। हालांकि ये टिके हैं। और लोअर फुलटॉस पे फिर से एक बार सही पकड़ नहीं बनाई, मगर एक रन जरूर मिलेगा। खेल दिया था मिड विकेट की दिशा में। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि क्रिकेट के मैदान पर एक जगह, एक पोजीशन ऐसी है जो कि पशु के नाम पर रखी गई है, वो है काउस कॉर्नर। तो इसके पीछे की कहानी जरूर बताना चाहूंगा। मगर इस गेंद के बाद ये 7वीं ओवर जारी। फिर से एक बार अजय दूर वाली छोर से गेंदबाजी क्रम में संभल कर खेला, बिल्कुल हल्के से कलाइयों के साथ स्क्वेयर की दिशा में। ये पोजीशन आती है लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के बिल्कुल बीचों बीच, जहां पर अक्सर कैप्टन कोई खिलाड़ी तैनात नहीं करते। जब कभी ओपन स्पेस होता है तो काउज, पशु आकर अक्सर चढ़ती है, तो उसका नाम रखा गया है काउस कॉर्नर, जो कि डीप लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बिल्कुल बीचों बीच वो पोजीशन। जोरदार शॉट हाफ वॉली पर, मगर लॉन्ग ऑन की दिशा में खिलाड़ी तैनात। सुंदरता से बल्लेबाजी करते हुए बिल्कुल देवीदास खोलकर और संजय नेत्रावलकर, जो कि बिल्कुल एक अच्छी साझेदारी बनी है और धीरे धीरे स्कोर को बढ़ाते हुए 36 रनों पर। बैकफुट पर बिल्कुल पॉइंट की दिशा में गेंद को भेज दिया है 1 रन के लिए। तो मुख्तार कादरी जानते हैं कि अगर ये पार्टनरशिप बनती है तो कितनी घातक हो सकती है। अक्सर पार्टनरशिपों ने मैच को अपनी ओर खींचा है और एक सुंदर पार्टनरशिप होती हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच। एलपीके 11 132 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इस मैच में, यानी कि यह दूसरा सेमीफाइनल्स का मैच। संभल कर खेला, बिल्कुल दिशा दी शॉट थर्डमैन की ओर 1 रन के लिए। 7 ओवरों की समाप्ति, 38 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सात ओवर की समाप्ति, 38 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सरगम गेंदबाजी के लिए लाए गए हैं, जो कि शुरुआत करेंगे 8वीं ओवर की। आप देख सकते हैं मुख्तार कादरी फील्डरों को एडजस्ट करते हुए फील्डिंग में तब्दीली लाते हुए, और सरगम को लाया गया है गेंदबाजी के क्रम में, जो कि शुरुआत करेंगे 8वीं ओवर की। 38 पर केवल 1 कामयाबी जो कि मिली है मुख्तार कादरी को। तो शायद मुख्तार कादरी अगली ओवर में स्वयं आएंगे और इस जोड़ी को शायद तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखना होगा। तो फिलहाल सरगम किस प्रकार से बल्लेबाजों की धुन बजाते हैं, या फिर बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी के साथ सारे गामा पा सुनाते हैं सरगम को। तो फिलहाल 8वें ओवर की शुरुआत। जैसे कि खूबसूरत परंपरा रही है, आप देख सकते हैं कि रेड कारपेट बिछाया जा रहा है मैन ऑफ द मैच प्रेजेंटेशन के लिए। बैकफुट पर खेल दिया है, बल्ले का निचला हिस्सा लगा और गेंद गई है गली की दिशा में 1 रन के लिए। जैसे कि खूबसूरत परंपरा रही है, हर मैच के बाद मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया जाता है। हर एक मैच के बाद लगातार ये परंपरा रखी गई है पंजिम जिमखाना मेंबर्स लीग की ओर से। तो बिल्कुल एक कामयाब, एक सफल टूर्नामेंट उभर कर आता हुआ ये टूर्नामेंट इस बार बिल्कुल सीधी गेंद को अपनी कलाइयों की बदौलत गेंद को मोड़ दिया है मिड विकेट की ओर।
और जब कभी कलाइयों की बात आती है तो एक नाम जो कि सभी के जहन में आता है वो है मोहम्मद अजहरुद्दीन, फॉर्मर इंडिया की कप्तान। और कलाइयों की बिल्कुल खूबसूरती के साथ गेंद को दिशा देते थे और जब उनका बल्ला चल रहा था तो ऐसे लगता था कि जादू की छड़ी उनके हाथ में। अच्छे से अच्छे गेंदबाज को बिल्कुल पसीना छुड़ा देते थे मोहम्मद अजहरुद्दीन। हाफ वॉली पर खेल दिया है गली की ओर संजय ने और इस एक रन के साथ स्कोर को पहुंचाया 41 रनों पर। अंग्रेजी में कहा होता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, और उसी प्रकार की बल्लेबाजी होती इन दोनों की ओर से। बिल्कुल सचिन तेंदुलकर की हाइट के देवीदास खुलकर अब स्ट्राइक पर। और लगभग स्टाइल भी उन्हीं की तरह आप देख सकते हैं। फिलहाल फिर से एक बार एक रन के साथ स्कोर को पहुंचाया 42 रनों पर। पूरी तरीके से ये दोनों ही बल्लेबाज सक्षम है कि अच्छी बल्लेबाजी कर एक शानदार साझेदारी बनाएंगे और बनाते हुए फिर से एक बार एक रन आप देख सकते हैं। हालांकि एलपी के 11 की दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिल्कुल ये अच्छी साझेदारी, हालांकि काफी जल्द ही पहली सफलता मिली थी डेम्पो चैलेंजर्स को, मगर उसके बाद क्या ही शानदार साझेदारी इन दोनों के बीच। अक्सर गेंदबाजों को परेशान करते हुए कि क्या करें, किस प्रकार से इन्हें रोकें, मगर अब तक कोई सफलता नहीं उस एक विकेट के बाद। तेज गति से सरगम बिल्कुल मिश्रण करते हुए, कभी तेज गति से कभी गति परिवर्तन, मगर फिलहाल इस एक रन के साथ 8 ओवरों की समाप्ति, 45 रन एक विकेट के नुकसान पर। टीचे तो अजय की फिर से एक बार गेंदबाजी, जो कि ये 9वीं ओवर की शुरुआत हो चुकी है और स्कोर 45 पर। डॉट गेंद के साथ शुरुआत 9वीं ओवर की। उछाल कर खेला हुआ ये शॉट, जानते हैं कि वहां पर खिलाड़ी काफी दूर तैनात है, तो जानबूझकर खेला हुआ ये शॉट संजय निद्रावल करके ओर से एक रन के लिए स्कोर को पहुंचाया 46 रनों पर। धन्यवाद कहना चाहूंगा इफ्तिकार आगा साहब का, जो कि मुझे मौका दे रहे हैं एडवोकेट टूर्नामेंट में। थैंक यू सर। बैकफुट पर जोरदार शॉट लगाने का प्रयास, बल्ले का निचला हिस्सा लगा और गेंद थर्डमैन की दिशा में जाते हुए लगभग 2 रन आसानी के साथ मिल सकते हैं।
दोनों के साथ धीरे धीरे फिर से एक बार स्कोर की गति बढ़ती हुई स्कोर जा पहुंचा है 48 रनों पर 48। आदर्श माहौल, सुंदर सेटिंग T20 मैच के लिए इस खूबसूरत मैदान पर। हल्के हाथों से ड्राइव किया मगर फुटवर्क के साथ मौका यहां पर, और बिल्कुल हल्का सा फंबल अजय की ओर से एक जीवन दान देता हुआ देवीदास खोल पूरी तरह से पकड़े गए थे मगर हल्की सी गलती के कारण एक महत्वपूर्ण विकेट लेते लेते रह गए अजय। हालांकि अंडरआर्म थ्रो जानबूझकर दिया गया था और फंबल के साथ एक जीवनदान, एक मौका देते हुए देवीदास खोलकर जैसे दिग्गज खिलाड़ी को, यानी कि इस रनआउट को मिस कर बिल्कुल एक न्योता इनविटेशन दिया है मुश्किलों को। इस मोड़ पर ऐसे मौके गंवाने नहीं चाहिए मगर कोशिश की थी, गेंद निकल गई हाथों से। बैकफुट पर खेलने का प्रयास मगर कवर की दिशा में खिलाड़ी तैनात, वहां पर कोई मौका नहीं। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से सुंदर फील्डिंग की तैनातगी की गई है मुख्तियार कादरी की ओर से। जहां तक निगाहें दौड़ती है वहां पर खिलाड़ी तैनात नजर आते हैं। केवल दिशा दी इस बार 1 रन के लिए, स्कोर जा पहुंचा है 50 रन पूरे होते हुए एलपी के 11 के इस 1 रन के साथ 50 का आंकड़ा पार करते हुए 9 ओवर की समाप्ति, 50 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पांच रन प्रति ओवर बनाती हुई टीम एलपी के 11 9 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन पर। रिक्वायरमेंट 6.6 रन प्रति ओवर। तो फिलहाल फिर से एक बार सरगम गेंदबाजी करेंगे जिसकी शुरुआत करेंगे 10वीं ओवर की। बैकफुट पर खेल दिया है, फिर से एक बार बल्ले का निचला हिस्सा लगा और गेंद गई शॉर्ट थर्मिंग की दिशा में 1 रन के लिए। स्कोर इस 1 रन के साथ 51 रनों पर जा पहुंचा है धीरे से। काफी भारी जिम्मेदारी मुख्तियार कादरी के कंधों पर टीम के मैनेजर नरेश पारसीकर के साथ डिस्कस करते हुए कि किस प्रकार से इस मैच में एक अच्छा कमबैक करना होगा। इसी बीच जोरदार शॉट लगाकर लॉन्ग ऑन की दिशा में केवल 1 रन प्राप्त किया बल्लेबाजों ने। 10 ओवर की समाप्ति के बाद होगा इंग्लिश में इस मैच का विवरण अपडेट्स। जोरदार ड्राइव करने की कोशिश मगर अपने आप से काफी नाराज, काफी थके हुए भी नजर आ रहे संजय नेत्रावलकर, मगर बिल्कुल सुंदर बल्लेबाजी करते हुए और देवीदास खोलकर के साथ लंबी साझेदारी बना रहे हैं।
बैकफुट पर खेलने का प्रयास, हालांकि टाइमिंग पर हल्का सा चूके मगर 1 रन अवश्य मिलेगा इस 1 रन के साथ 53 रनों पर। अपने तीनों ओवरों को बिल्कुल रोक रखा है मुख्तियार कादरी ने, केवल 1 ओवर के बाद अपने आप को बदलाव लाया। हालांकि पहली ओवर में ही पहली सफलता मिली थी टीम डेम्पो चैलेंजर्स को, उसके बाद कोई सफलता अब तक नहीं, जो कि अब ये 10वीं ओवर प्रगति पर अभी भी बिल्कुल विकेट के लिए कोशिश करते हुए गेंदबाज। इस बार उछाल कर देखे लाए, कैच का मौका और एक आसान सा कैच खेल दिया था मिड विकेट की ओर और वहां पर खिलाड़ी तैनात, कोई गलती नहीं की। इस प्रकार से बड़ा विकेट की सफलता मिलती हुई सरगम को और सरगम अपनी धुन बजाते हुए। बिल्कुल डेम्पो का परचम लहराता हुआ एक हल्की सी कमबैक करती हुई टीम सुंदर कैच के साथ चलता किया और 30 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया देवीदास खोलकर ने अपनी टीम के लिए। क्या ही शानदार बल्लेबाजी की। तो सरगम को मिलती हुई ये दूसरी विकेट की सफलता, हालांकि पहली विकेट मुख्तियार कादरी के खाते में। 53 रन 2 विकेट के नुकसान पर ये आखिरी गेंद 10वीं ओवर की। जोरदार शॉट लगाया, वहां पर मुख्तियार कादरी मौजूद, कोशिश करेंगे बिल्कुल सुंदर फुटवर्क के साथ। कभी कभार फुटबॉल खेलना क्रिकेट के मैदान पर काफी महत्वपूर्ण साबित होता है और अक्सर फुटबॉल खेलते नजर आते हैं मुख्तियार कादरी। इस 1 रन के साथ इसको जा पहुंचा, 2 रनों के साथ इसको जा पहुंचा है 55 रनों पर। 10 ओवरों की समाप्ति के बाद 55 रन 2 विकेट के नुकसान पर ओवर की समाप्ति। ओवर। तो बिल्कुल अब बचे हुए 10 ओवरों में 77 रन बनाने होंगे, यानी कि हर एक ओवर में 7.7 रन बनाने होंगे। तो लगभग 8 रन का अब रन रेट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 132 के लक्ष्य का पीछा करती हुई टीम एलपी के 11। Beginning of the 11th over and the batters required 7.7 runs every over. They have to score in 10 overs to get to the target of 132 to win. Ajay from the far end into the bowling mark.
into the bowling proceedings. Beautifully angled the ball in the short third-man region for a single, which will take the score up to 56 runs after 10.1. Every rotation of the strike, there is a slight bit of a change in the fielding brought by Mukhtar Qadri. One-man army. He is trying to utilize his mind in such a way that how to get back in the game and send or push LPK 11 on the back foot is the game plan strategy which is running in the mind of the captain, who's deployed now himself in the long off range. Ajay on the bowling mark. 11th over in progress. Half volley nicely driven. Oh, the ball deflected. Oh, right on the stumps. What a breakthrough here for Ajay. The stumps dislodged and the bells flew higher, and that is how the third wicket comes down crumbling. What a breakthrough, and now Tempo challengers are making a comeback and come back with a great style. Bowled him. For Ajay and the ball right on the money. Manish Kakore, the new batter who just walked in and taking his guard, marking his line alongside Sanjay Netravalkar, who's there deployed in the non-strikers end. This is the 11th over, getting a success of wicket number 3. On the back foot, beautifully played in the gap. The ball might just race away to the boundary, and yes, it does. No way, good footwork. Good footwork from the fielder. Such a great batsman, Sachin Sardesai, who if last year would have played a long inning like Devidas Kholkar. In fact, both the batters are at par. They both have the similar qualities. They rely on their batting ability. But what a breakthrough from Ajay in getting rid of such a great batter, Sachin Sardesai, so quickly. Coming down the track on the half volley, hit it straight down the ground to long on. Excellent piece of work there and good throw. Just restricted and limited the batsman on just a single run to take the score to 59 runs. Big role to play Mukhtar Qadri, as you can see. He's been running around every corner of the ground, making sure the fielders are right on the position. Once again, he himself gets him back to the long off pitch by swapping the fielder. 59, and this will be the last delivery. On the back foot, wanted to steer, angled ball. A dot ball. What a successful over from Ajay. Completion of 11. It's 59 for 3.
2 to achieve and win. If they do that, the team will be qualifying for the finals. But however, now what a great comeback from team. Tempo challenges. They brought Kiran Shirvaikar once again on the bowling mark to begin the 12th over. Once again, a very good afternoon to everyone who has just tuned in Goa, in India, and entire globe watching this fantastic match. And what a wonderful match this has been. It has been a blockbuster for sure. Because each and every moment of the match has all the ingredients of a classic T20 match at the second semi-final of Panjim Gymkhana Members League. You name it, romance, tragedy, comedy, suspense, and the climax. You can't just ask anything more than this. Full marks to all the fielders for putting up a great show and making this tournament a great, grand success. Kiran Shirvaikar to begin the 12th over and score is 59 for the loss of 3. 7 wickets in hand and still a long way to go. LPK 11. On strike is Manish Kakode. A shot of length delivery slightly away. We'll have to wait for the umpire signaling what it is from the bat, from the pad. Leg by signaled. This extra will take the score up to 60 runs. Exactly 72 runs what more they need now to get to the target of 132. The ball is up and catchable. A simple catch in the covers to dismiss. Departs Sanjay Netralokar. Once again, this time Kiran Shirvaikar strikes and brings down the 4th wicket of LPK 11. 60 for 4 now. Semi-finals. What a tug of war this is between two great performing teams of the tournament. In the meantime, good looking drive in the deep point region. That will be 2 runs easy. Will be added up to the total to take the score tally to 62 runs. A lot of fall of the wickets, almost 4 now. Chasing a target of 132 runs to win. What a wonderful tournament this has been. Absolutely a great event. Nicely done. Good timing. And look at the soothing sound coming from the bat the moment the ball left the bat. That is called exactly the timing. The sweet area of the bat has been hit by the ball. And that is when you get this kind of a soothing sound. A single additional to take the score to 63 runs in the 12th over. Oh, wanted to play, missed it completely. The delivery has surprised Sachin Bhandari, the new batsman, who has walked in.
A lot of quick fall of the wickets. Great bowling. This is from Kiran Shirvaikar. After good batting, he's a complete package for the T20 format. Having a word with the captain. Want to adjust the field according to his requirement. And slightly the requirement has been clashing between the captain and Kiran Shirvaikar. Nicely played the dot ball. Sums up the over number 12. It's 63 for 4. Over. Music from our DJ. A lot of Prabhu Deva, Michael Jackson can be seen in and around. I welcome my friend Tanmay Uzgaonkar, who is here to watch this match. Warm welcome. Maharudra Rising Stars team owner. Tanmay, a warm welcome to you, sir. All the way from Fonda. So beginning of the 13th over, it's 63 for the loss of 4. What a turnaround. Who's going to win is still a big question. As I hold my fingers crossed, it could be anybody's game. Pranadhuri batted so well and now has a job to do with the bowling. The very first ball, nicely played in the deep point region, picked up a single and moved the score to 64 runs. Once again, the same strategy the batters has to keep a controlled aggression. Singles, toes, keep going, but wait for the right opportunity. Anything half volley, short of length, juicy full toss, put full power and hit those balls to the fence. And that should be the strategy, that should be the game plan. Very quick delivery right onto the stump, but nicely done, beautifully worked and played Sachin Bhandari and Manish Kakode. Now these two batters has the responsibility to take the team's total ticking after the very quick fall of the 4 wickets, one after another. Of course, we saw a great partnership between Devidas Kholkar and Sanjay Netravalkar, but after that the wickets started falling very quickly, crumbling in fact, one after another. So again a very quick delivery, beautifully played, giving himself a bit of a roam and played straight once again in the deep point region. Could be a close one this time, but by the time a slightly wideish throw that was has allowed the batters to complete 2 runs comfortably. Good running, says Sachin Bhandari to Manish Kakode. Manish Kakode, who picked up 3 wickets in just 1 over and now has a job to do with the bat. What a great performance that he is. Today the team of LPK 11 depends on the ability of Manish Kakode. If he survives, if he stays, if he plays a long inning, definitely LPK 11 will prosper in this match. But if the wickets keep on falling every regular interval, it will be a trouble time. It will be as if LPK 11 will be scaling the Mount Everest in the difficult situations. But one good partnership once again will take the team back to the track. They have to go smoothly. Very quick delivery this time, excellent piece of work there, good fielding, good follow through on his own bowling. However, it was deflected from his hands
But there is a fielder, the Mukhtar Qadri, the captain himself, who has captained Maharudra Rising Star at a tournament last year at Farmagudi ground, and Maharudra Rising Stars were the champions in that particular tournament. As I just remember, because Tanmay Usgaonkar is here. Good looking drive, but the ball is straight back to the bowler. Panavduri bowling over a fantastic line in length, not allowing any room for Manish Kakode. Every dot ball will be added pressure on the shoulder. But it is the temperament of the batsman, how he sustains the pressure and he keeps going. That is important to see in the batting of Manish Kakode's batting or inning. Fuller on the half volley, beautifully driven, handsomely driven to long off region for a single to take the score to 68. That sums up the over number 13. It's 68 for 4. A fabulous over, which was the last over, and once again he's been continued from the pavilion end to begin the 14th over. Score is 68 for 4. Can Kiran provide one more wicket for Dempo Challenges, who can the batters form a good partnership and keep ticking the score, carrying on with the momentum? We'll have to wait and watch as this over will unfold. Good looking line, a good length, but beautifully worked and played straight down the ground to long off once again by Manish Kakode. Slowly looking calm, cool, composed, collective, relaxed frame of mind. A lot of big responsibility on his young shoulders of Manish Kakode. A hand on the hip on the non-striker's end. He's got to play a very important role in this match. Sachin Bhandari on strike. Score 69, and once again you can see marshalling his resources and deploying his troop, Captain Kadri. Mixture, absolutely beautiful delivery that was from Kiran Shirvaigar. What a great delivery that was, absolutely a change of pace, so brilliant, in the line so very perfect. Only few bowlers has this ability when they can bring in the change and keeping the line very perfect. Kiran Shirvaigar is one among them. It's a fantastic bowler, a great warrior, a complete package. Batting and bowling from him was just outstanding in this match. Oh, once again a change of pace, absolutely brilliant. Getting back to back the change of pace. Once again, look at the deployment of the fielders. There are two fielders now in the gully and a point.
There is a deep sweeper cover as well for Sachin Bhandari. A lot of change of pace from Kiran Shirvaikar. 14th over, which is in progress. This time a little bit of bet on that. Would have taken the head off of the square umpire Atmaram Arolkar. Atmaram Arolkar just ducking it down right on time. Good to see you. Warm welcome to Robin D'Souza. Very talented cricketer. A good looking drive, nicely connected, but excellent piece of work there from Mukhtiar Qadri. What a great over this is turning out to be once again. A lot of applause from the dugout of Tempo Challenges. It's been a year now I've not seen Robin D'Souza in action. Maybe we'll be seeing him soon. Such a great entertainer of the crowd, a good hitter. Now the coach of under 16, 19, all the best for his coaching career. Once again a change of pace, absolutely brilliant, right on the money. What a breakthrough and a much needed wicket here for Kiran Shirvaikar. And the team, Tempo Challengers, are right back on the game. The 15th over score is 71 for 5. Wickets are falling once again. It continues to fall every regular interval. There is a fall of the wicket. LPK 11 have to recover. They have to come back. They have to form a partnership, which is a must here at this juncture of time when the team needs some contribution. Good looking shot in the covers. Oh, chance of a run out here. What it was. Yes, it is. The batsman is walking and
Another wicket goes down. LPK 11 are now on 6 wickets down. Anish joins in at number 8. What a fall of the wickets after that partnership once again. That was the highest partnership between Devidas Kholkar and Sanjay Netravalkar, and after that there seems to be no partnership prospering. Is what a great bowling attack, good line, good length, picking up wickets every over or every alternate over. Is what a good comeback here from Tempo Challengers in this second semi-finals. Pranaduri, Siddhartha, the tall, strong boy of LPK 11. The score is 72, and how to take the team's total to 132 will be challenging here. But in the game of cricket, anything is possible. A good partnership here from LPK 11 batters can still take the game away from Tempo Challengers. Shot of length, a bit of risky work. Oh, slight fumble will make way for 2 runs here for the batters. And yes, it is with the help of these two. But there wasn't a single either. It was 2 runs to take the score to 74 runs. No, exactly 58 runs away from the target to achieve. Siddhartha has a very important role to play here. He was a fantastic bowler with a lot of pace from his deliveries, and now he has to show the same pace in the batting ability. Both the teammates are dancing. If the wicket falls, there is a dance in the dugout of Tempo Challengers. There are runs. There is a dance in the dugout of LPK 11. Oh, the ball is up and could be another wicket fall here. Fielder is settling down, but difficult for him. Just one-handed is not recommended, but still he tried his best to get to the ball. He's limping. Maybe he has just twisted his ankle in the process. Oh, he's down on the floor. Yes, replacement. Replacement, says the captain. Oh, he's okay. I'm good, he says. Look at the fighting ability of the players of Tempo Challengers. He's limping, but still he wants to give the best performance to the team. That is what is more appreciating. Very impressive. And this ability in the fielders has makes the team Tempo Challengers more favorite in this league. Panjim Gymkhana Members League, and this is the second semi-final. One team which has made it to the final is Prescon Panthers during the Republic Day. Fine edge, and yes, it is another wicket for Tempo Challengers. Wicket number 7
Again on the bowling mark to begin the 16th over. 7 wickets down, just 3 wickets in hand, little resources, but still a long journey. And the journey will be full of troubles for team LPK 11. What a comeback from them for challenges. Mukhtar Qadri. The ball kept low, wanted to drive but missed it completely. Look at the reaction of Qadri. The hands on the head, how close that ball was from the stumps. Wonderful delivery to start with, to begin with the 16th over. The best thing about the Dembo challenges is the speed with which the bowlers bowled are absolutely fantastic. All the bowlers maintained good line, good areas, good fielding followed as well after that fall of the wicket. Oh, good looking shot, but excellent piece of work there. Just the hand to the ball to stop that. Otherwise the ball would have raced away to the boundary because there was no backup fielder there after that fielder. So good work, Aryan Mashilkar. These youngsters are doing job, Mehank Dharwadkar and Aryan Mashilkar, with much experience from the captain Qadri Kiran Shirvekar. Joining the team, Surgam Falari, Pranodhuri, Naishat Kamath, who gave a good start alongside Geet Sel. That partnership, open wicket partnership, was absolutely a key. They laid the good strong foundation for the team to get going. In 131, 132 is the target to achieve still. Oh, swinging delivery, absolutely spot on. Mukhtar Qadri's bowling is best, what he can. And that's the reason he's been rated as one of the most smart captain, shrewd captain, intelligent captain. Great ability to bring the team back in the game. Change of pace, little bit of a low full toss there, and the ball has been hit. Well fielded. And every time they're trying to bring that kind of a change, which normally takes the batsman by surprise, but this time a good read from the batter. Well read shot, and it didn't quite time the ball, but still had enough, plentiful of bat to take the ball to the fence. What did he? Didn't quite time the ball. Vinay Palekar has just joined in. Now bowlers, what we see is coming to bat for APK 11 at number 8 and 9 after the fall of 7 wickets, one after another. The wickets crumbled after that great partnership between Devidas Kholkar and Sanjay Netravalkar. After the very first wicket breakthrough in the very second delivery of the first over, Mukhtar Qadri provided that early breakthrough, and then it was a great partnership. Then again the fall of the wickets continued one after another. 78 for 7 wickets down now in the 16th over, which is in progress, and this will be the last delivery of that. Vinay Palekar on the striking position. Oh, there was an opportunity, caught and bowled. Oh, missed it. The opportunity going down, begging. Dot ball to some of the over number 16. Score remains on the same. It's 78 for 7. DJ.
So beginning of 17 is once again Pranav Dhuri from the far end to begin the 72. Score is 78 for 7. Chasing a target of 132 to win in the second semi-final. The winners will go through to the finals. A good looking drive. Didn't quite get hold of that one, but still will get a single here in the mid-wicket region that he played Siddhartha. Tall guy. And a big responsibility on his shoulder. The wicket-taking ability of the bowlers of Dempo Challengers have pushed LPK 11 on the back foot at the moment, because it will just not take time for the team to make a comeback with a good batting ability. Low full toss, once again a good hit, but will find a fielder in the long on region this time. A lot of singles every ball now. Vinay Palekar and Siddhartha are the batters on the crease for LPK 11, battling it out against one of the most high-performing team of the league is Dempo Challengers. Quick delivery, pitch delivery. Once again, a line very perfect. Good hit. Gets hold of this one. The ball is racing away, but finds the fielder there in the deep sweep cover. That should be just one with that wonderful shot coming from the bat of Siddharth, but still what they get is just a single run. This single will not serve the purpose. They have to run. But let me tell you one thing, that Vinay Palek is having trouble running because he's injured. He can hardly run. That will be a setback for the team LPK 11. Oh, good looking shot, good looking drive. But just for a single, Mehang Dharwadkar in the mid wicket. Very quick, lightning quick on the ball. Great piece of work. The fielders are very impressive right from the beginning. Anything that comes their way, they have stopped, they have put in their best of the effort and restricted the batters to the minimum what they can. Fuller on a dot ball to sum up the over, number 17. 17 has gone by, it's 82 for 7. I would like to express my gratitude and a big thank you to the tournament sponsors, Kineco, co-sponsor, Majestic Pride, medical partners, Manipal Hospitality, hydration partner, Real. Beginning of the 18th over, score is 82 for 7, still a long way to go. 132 is the target. 50 runs in 18 deliveries is the equation. They have to go
absolutely berserk. They have to just open. The batters need to launch an attack assault against the bowler. Good hit, good timing, but the ball will be fielded as there is a fielder there in the deep mid-wicket region. A single to take the score to 83, and now the equation is 17 balls and 49 runs. Look at the signals from Mukhtar Qadri. He's got the job, the last delivery, till the last delivery of this inning. He's absolutely showing how the batter is going to hit him. He's going to bowl a fuller on. Mukhtar Qadri makes it looks very interesting match. Let me tell you, he's highly, very short temper captain. Sometimes a good hit. Get the hold of this one. The ball will go rocketing away. Beautiful, a cracking beauty from Siddharth. Straight in the sweeper cover, straight to the fence. It's a boundary. Time shot that was from Siddharth. Timed it to perfection. The ball coming right out from the middle, and this is called the timing. The ball is up this time and will once again race away. And yes, it does. Back-to-back boundaries as Siddharth is now taking the charge and rising up to the occasion and playing some brilliant shot. Back-to-back boundaries. A word of advice here from the captain to Mehang Dharwadkar as he's getting expensive. And Siddharth has definitely launched an attack against the bowler. He's going one after another, back-to-back boundaries. Every ball now he wants to hit hard and send the ball across the fence, across the boundary rope. LPK 11 just not giving up. Great fight back. This time straight to the captain. A slight fumble there. They pushed hard for two and they will get it easily. This is good running between the wickets. Apologies for the bowler for good bowling, good line and length. This is needed for the bowler, Mehang Dharwadkar. Some appreciation, some good words for his years to give him that kind of confidence to bowl good, bowl well. Once again, a lot of work it will be for the captain underarm throw this time. 93 with the help of this single. 94, correction. And this is the 18th win. This will be the last delivery of Mehang Dharwadkar. Dominic Briganza is still unsure who's going to win this match. Once again, didn't quite time the ball this time. Vinay Palekar. Sometimes overarm throw, sometimes underarm throw, but right on the target. The single sums up the over number 18. It's 95 for 7. DJ.
12 balls and 37 runs needed to get to the target of 132 to win for LPK 11. With a good bowling ability, things will be more difficult here for the batters, as one hope there is definitely that Siddharth is timing the ball quite nicely. But can he bat good enough to take the team to the target of 132? That is now the requirement is 12 balls, 37 runs. The tallest in the team against alongside the smallest in the team in size, of course. Bade Miyan, Chote Miyan is what we can see on the crease for LPK 11. Mukhtar Kadri from the far end to Vinay Palekar on the striking position. The height really doesn't matter when it comes to batting. As one good example is our master blaster, Sachin Tendulkar, who's been rated as the best batsman in the world. Really didn't have a good height, but has had the reputation of hitting the tallest of the bowlers in the world and taking their forms out. Mukhtar Kadri once again, as you can see, like a traffic policeman, he's trying to just adjust the field as per his requirement. He's the captain as well as now he's the bowler. 12 balls, 37. Very quick delivery. A good hit from Vinay Palekar for a single, which will take the score to 96. That brings the tall and a strong guy on the striking position, Siddharth. 11 balls, 36 runs is now the equation. Bottom edge, the ball is racing away. A good footwork, absolutely good footwork, like a footballer, professional footballer, Lionel Messi. It is not always the eye-hand coordination in the game of cricket. Sometimes what works well is eye-leg coordination as well. We just saw the good example in the deep third main region. The ball was rocketing away, but with a good footwork, he has stopped the ball and restricted the batters to just 2 when it was 4 written on the ball. Good efforts, good fielding. Pranav Dhuri, definitely he's playing football, and sometimes playing football helps in the game of cricket and vice versa. Good hit once again. The ball this time will definitely win the race. It will be a boundary from the bat of the tall chap Siddhartha. DJ. To a 3-figure mark, that is 102 of LPK 11, chasing a target of 132 in the second semi-final. Mukhtar Kadri to Siddhartha. Bowled him, absolutely brilliant. Someone just anticipated and called is going to bowl him, and that is exactly what happened. The 8th wicket goes down of LPK 11. The wickets are once again falling as the team, the challengers, are marching towards the victory. DJ.
Shekar and Atmanam Arulkar. So making their ways to the final. What a comeback. Tempo challenges. Is going to be the team, it looks like, because the match is still not over, are going to go through to the finals alongside Prescon Panthers to be played tomorrow in the morning. In the commentary box will be Tushar Naik and Ranline Tobar and Waldine Watibar. Malwani commentator Badal Chaudhary. Half volley, good swing of the bat, but no connection whatsoever. Just now in 7 deliveries, what they need is 30 runs. And score remains unshaken, 102. They need almost now every ball to the fence in the form of sixes. Not even boundaries is the requirement for LPK 11 to win this match. Operate the ball, this time will race away to the boundary. And a lucky boundary here to take the score to 106. That sums up the over number 19. 106 for 8. So once again a big thank you, and I would like to express my gratitude to the tournament sponsor, Kaineco, Majestic Pride co-sponsor, Manipal Hospitality, medical partners and real hydration partners. And what a fantastic team which is working behind the curtains. Trends, Paresh, Sarfraz Shah and others joining in and making this tournament a great grand success. With calculus every match there is a man of the match, as you can see. The red carpet has been laid for the post-match presentation. Coming down the track, the ball is up and could be a catch, and yes it is. The 9th wicket goes down now. And Vinay Palekar is out. Tempo challengers are going through to the finals for sure. Mukhtar Qadri, you can see with the orange cap, the highest run getter of the tournament, and he has a bright opportunity to win the man of the series if he continues the form in the finals as well. The match is almost now coming to an end, coming to a conclusion, and one thing is certain, tomorrow it will be Prescon Panthers versus Tempo challengers. Now who's going to be the man of the match? Well, the jury is working on it. Change of pace, absolutely brilliant from the bowler. If you say it in English, the change of pace, in Hindi it is Gati Parivartan, in Kannada it is Gatiya Badlavane, in Malayalam it is Vegadedu Matram, Tamil Vega Matram, Telugu Vegam Yokka Marpu, in Marathi Gati Badal, in Gujarati Gatiman Fairfar, in Urdu Raftar Ki Tabdili,
In Malwani, it is one line Tobber and one line Watiber. So a lot of change of pace that what we saw in this tournament. Absolutely brilliant. But the day Mangal Das in 1 over, the change of pace brought him the success of 3 wickets, and Mukhtar Qadri is constantly bringing that change of pace very frequently, which gave him also a success in this particular semi-final as well. Left-hand shot, and that will be safe. There's a lot of excuse me. Look at the flags of flying high of tempo challenges. Absolutely, what a comeback in the finals. From nowhere has made a comeback with a good bowling skill and fielding ability. Just 1 ball left now to end this over, and a big thank you I would like to say to the members of Panjim Gymkhana for giving me an opportunity. This is Nadeem Ahmed signing off. Congratulations, Tempo Challengers, for a fantastic win. You are through to the finals alongside Prescon Panthers. In the finals to be played tomorrow in the morning. And now it's time for man of the match. That is a post-match presentation. I would like to hand over the mic to Kakulusa. A match befitting a virtual semi-final, a fantastic game of cricket held. Nobody thought that 131 was such a difficult task, but the Tempo Challengers made a match out of it. They deserve to be in the finals. Well fought LPK 11, well played Tempo Challengers. Now for the presentation function, may I have the pleasure to invite here the chief guest for today, Mr. Ajit Dalvi, Circle Head of HDFC Bank. Sir, please come, please join me. I would like to also invite Mr. Srinivas Dempo, the owner of Tempo Challengers, the finalists today. Give a big hand to Mr. Dempo. Mr. Dempo has made sure he has been here personally for each and every match, sporting the pink, and today you can see the sea of pink here on the Panjim Gymkhana grounds. I would like to also invite Mr. Shekhar Sardesai, the casting ceremony. This is going to be the last one before the finals. Friends, I don't know how this month went off. It has been a fantastic time of cricket. Everybody enjoyed the fellowship, and it was a great time for all of us. More than anything, it was the camaraderie, the friendship, and the kind of time we have spent with each other that we all enjoyed. Ultimately, end of the day, there can be only one winner, but I think we have to give a big hand to the 3 teams who are no longer in the tournament now.
the Ballet Tigers, LPK 11 and Manas Mavericks. All three of them, they played very well. The final will be played tomorrow between Prescon Panthers and Dempo Challengers. Now for the presentation ceremony, I would like to first invite the captain of the losing team, Anup Kursarkar. Is he around here? I saw him being attended by the physio some time back. Oh, he's not keeping well, no problem. So I would like to invite the winning captain over here, Mukhtar Kadri, to please come and join us over here. Come, Mukhtar. It was really unfortunate to see you not getting your 30, a usual 35 in this match. Because I think probably what happens is that his mind is running faster than his body. That is what happened. So what do you have to say about your performance today? First of all, thanks for the Dempo giving opportunity for us to play for the Dempos. Not a sure winning is very important for us. If I run out for one, my Kiran has done the cover up for that. He has hit it 360. That is a small man speed ball, and we have to be united. That's why tomorrow we are having one last match. That is a very important match with the Prescon, which we defeated in first qualifier. We have to try over there. If we win, that is important for us. Thank you. Give a big hand to the winning captain. I would like to invite Mr. Dempo to please join me over here. Mr. Dempo, you have been here to cheer for your team right from the first match. And that goes to show you have not only put in your money, but you have put in your soul into it. I think he deserves a big hand more than anything. So, and I think your team has lived up to your expectations to reach the final frontier. Thank you, Manoj. And I first would like to salute all my boys. I think they've done a brilliant job. I mean, you put your heart and soul into the game. I saw that. And what a victory it was. I mean, there's nothing better than a victory like this. I would also like to compliment LPK. They really kept us on our toes. You know, I remember when those 3 wickets were gone, I thought we'll be bundling up within 80 or 90. So good game played by LPK. And I think what is important, as Manoj says, is the kind of time that we've spent here. You know, the whole month, he said that, you know, I gave a lot of time, but that time was well spent because it was all with a lot of joy and happiness to see so many teams. And the players who are not even professionals, some of them, despite showing their age, I could not imagine that they could do this kind of batting, fielding and bowling. So once again, thanks to Panjim Gymkhana and thanks to all of you for making this possible. Thank you very much. Now I would like Mr. Dempo to present the purple cap, because what happens is that in the morning today, I had the privilege of presenting the orange cap for the highest run scored in the tournament so far to Mukhtar Kadri. And now it is time to present the purple cap. And the purple cap till now has been won by Dr. Ajay Pednekar, who has taken 8 wickets at an average of under 14 runs. So request you to present the purple. Okay. Congratulations. Come. Congratulations to Dr. Ajay Pednekar on winning the purple cap. So now the orange cap as well as the purple cap is both with the Dempo Challengers. Now it's a time for the man of the match. Request our chief guest, Mr. Ajit Dalvi, to please present the man of the match. And the man of the match today, I think, is a very obvious. Someone who scored 37 runs in 19 balls and took 2 wickets for 8 runs in 3 overs. Kiran Shirvoikar of Dempo Challengers. Congratulations. He also gets a trophy, being the man of the match, and a smartwatch sponsored by Zaveri's. I'm sure he's going to bat smarter in the finals.
Thank you very much, Kiran. Congratulations once again, all the best. Now, ladies and gentlemen, it's only the final frontier, which is tomorrow. We will start tomorrow at 10 a.m. exactly. Request all of you to be on the grounds by 10 a.m. with your family and friends. We'll be doing the toss at 10. We'll be having a small function, inaugural function in the morning, and then the match starts. So request all of you to please join us tomorrow. That's all we have from the presentation party. Thank you very much.